Hello, good evening, and Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all on behalf of Scholars Avenue. I am Zoha, an Erasmus Mundus scholar from the Biopharm program. And today we are going to have an Erasmus Mundus webinar, and we have with us 4 different guests who are from different backgrounds, studying in different Erasmus programs from fire safety to food nutrition to cartography and to acoustics. So we will be welcoming all of them today, and we'll be hearing their stories, their experiences, and we'll be getting tips from them. But first of all, I would like to explain to you what Scholars Avenue is. Thank you all for joining us today. Um, Basically, Scholars Avenue is a platform developed to help students like you get opportunities and scholarships worldwide. We are not only having Scholars Avenue, but also 3 other platforms that you can use to, help. That you can use to get help in scholarships and different other things. We have developed scholarships GPT, where you can just put in your background, your work experience, and you can get all the scholarship opportunities according to your background. Then we have also developed Erasmus scholarships, which is very relevant to today's webinar. So I have a screenshot of it here. And you can just go here in the all courses, here search by field or discipline, and you can literally search the course according to your field. So if you are someone from a biology background, if you're someone from a chemistry background or civil engineering or whatever background you have, you can literally just go to erasmusscholarships.com and search your field or discipline here, and you will get the list of all the Erasmus Mundus courses that you have for that field. So this is a brief description about what we have done for students around us. And now I would like to introduce the panel for today. The first speaker we will have is Farooq Hassan. He is from IMFSC Fire Safety, and he'll be explaining his journey, and he will be guiding you overall on what Erasmus Mundus is and how you guys can get it. Then we'll have with us Hira Binish, who will be explaining her struggle, her journey, and she will be explaining you about students who come from, biology or agriculture background and how they can get Erasmus Mundus scholarship. Then we have with us Itrat Fazil, who has a background in who is studying cartography actually, and she will be explaining her journey. And then we have with us Shoaib Irfan, who will be explaining his journey from a very different field of civil engineering to acoustics and sounds and waves. So this will be, I hope, a very interesting session, and of course this will be very beneficial for all of you. Now, before wasting any time, I would like to welcome our first speaker, Farooq Hassan, on board, and here's to him. Off to you, Farooq. Hello everyone, is my screen is visible? Yes, we can see your screen. Okay, thank you. So hello everyone, my name is Mohammad Farooq Hassan, and I am an Erasmus Mundus scholar and a graduate of the IMFSC program. And thank you for Scholars Avenue platform to conduct this webinar for students. And today I will be sharing with you an overview of the Erasmus Mundus Scholarship, its general requirements, and also my personal journey through this program that I get throughout the 2 years. First, before diving into the details of the requirements, let's first understand what Erasmus Mundus actually is. Basically, it's a fully funded European scholarship program, providing students with a monthly stipend of around 1,400 euros. And the Erasmus Mundus, but basically it offers 1,400 euros scholarship, and that just not covers the tuition, but also travel, insurance, and the living cost. And also students get a chance to study not only in Europe, but also sometimes some programs do offer students to study in UK, Australia, USA, and also in some Japan, and sometimes in Chinese universities also. And another unique feature is that it's highly competitive and a global program that attracts applications from around the world. And the selection is very prestigious, and the getting is at the end not only supports your education, but also connects you with a diverse and talented community of scholars. So now coming to the general requirements for the application. First, you need an academic background that should be relevant to the program. Currently, there are around 210 to 10 to 220 programs. And obviously, you can find easily the programs that are relevant to your own field. And every program has its own field focus. So your previous studies should align. This is the main thing. And secondly, your application documents are the key requirements. This means a strong CV, a well-written letter of motivation, and a staff letter of recommendation. These documents are what like they set you apart. And these documents are how they should be. They will be explained by my colleagues, the fellow scholars. And
thirdly, you need a language proficiency, like usually IELTS or TOEFL. Sometimes some programs do expect the language proficiency and English certificate you can get from your own universities. But I would say around like 80 to 90% programs do require IELTS. So it is important for now for the coming intake. If you have a target, that do it now for the IELTS. This is the good time. And the exact score requirement vary by program, but it's always better to aim high. Around 6.5 overall band is the general requirement of every program for the programs that do need IELTS. And finally, the most important part is the clear motivation and program fit. You need to show why you are passionate about your field and why you fit this program that you are applying and how it connects you to your future goals. And for the main documents, CV, letter of motivation, and letter of recommendation, I will now like to invite Kira. She will explain about the CV and then about the letter of recommendation and motivation by Itrat and Shape respectively. And by the end, I will share about my personal experience through this program. So please, Hira, can you come now? Thank you so much, Farooq, for your introductory lecture. And I'm Hira, as it has been mentioned before. I will be talking about CV. Uh, Normally, I make my CV on Europass because for Europe, Europass CV is the only acceptable CV. And for countries like China and for others, I used to make like my CV on Word. But for Europe, I have always presented my CV on Europass. So I will be telling you like how do I categorize my CV? How do I cut it off into the most important parts? So one thing is that if you, this is like my personal experience that I have been following. So if I'm applying for my internship or any of the job opportunity, then I try to put my work experience on the top. And if I'm applying for my master's or a PhD, then I try to put my education at the top. And okay, so it's I'm just saying that if I'm designing my CV, if I start from the start, the very first thing is personal information in which we give our name, our passport number, everything like our address, and then the second part. Which I always cut it off for the students who are sending me their CVs for reviewing. I have never added about me, like the information about me. I don't use that because I feel that the generic things should be removed and the more specific and more achievements should be highlighted. So my very first section is always education if I'm applying for bachelor's or like master's, and if I'm doing for my job application, then I put my internships and work experience at the top. And then for if I'm applying, if I'm mentioning my education, then I try to make it diverse, adding different types of subjects. For example, if I was applying for my Erasmus masters, we had like different subjects like in my master's degree is interdisciplinary. I'm studying agriculture, food science. So I used to make my CV also very diverse in order to fit with that bachelor's program. But if the program is specific, that then I would make my CV specific to that major. But because my master's was interdisciplinary, so I used to add like one subject from soil science, one subject from statistics, one subject from PBG, just like this. And then my thesis topic. And after that, I used to put my internship experiences. And for that also, I have never written the whole sentence indicating a lot of information. I just, for example, if I'm mentioning one of the experience, I write at the top that I gained insights in, and then like colon and all the things in the bullet points, just to add more stuff in lesser space. And then after my education and work experience, I highlight my scientific experiences. For example, if I have worked in a project or any conference, that is scientific conference, any international conference, for writing all these, I try to highlight what is best thing about. For example, if I'm attending a conference in University of Agriculture, Faisalabad, but it has some affiliation with an institute in UK, so I will be highlighting that institute way more than my own university where it was held. So I try to highlight the best part about whatever achievement I'm mentioning. And after that, I used to write my awards, whichever I have won, like my if I have silver medal, anything like that. And after this, I used to write my certifications, like my courses. And for that also, I try to highlight that which university was organizing this Coursera course or any international course. And if there is not any university to mention about, then I write about the person who was hosting or who was teaching the course, because those people have like very good scientific ranking. So I try to make it like a bit more impressive, mentioning about them rather than just highlighting the name of the course. And lastly, one main mistake that every student has done, whoever is sending me their CV for reviewing, is that they never add references properly. So I add two references at the end, one, mostly from associate professor or professor. I never added reference from
from the assistant professor. So for the reference, you need to add the professor's name, his ranking, his address in the university, his email address, and his phone number. And I think it's very important because those beginners who were sending me their CVs, no one has added references. But adding two references is very important in the CV. And that for one major mistake that students do when I am reviewing their CVs is that they just sit and they categorize themselves, their language abilities by themselves. For example, they're like, okay, so I can read up to B1, so they just put B1, C1. But it's not like that. If you have done IELTS, then you can categorize your language abilities or any other test, and you cannot write B1, C1, or C2 on your own by just guessing, self-guessing. So if you have done your IELTS, then you can add your language ability. But if you have not done that, then you cannot add. And also I used to add like volunteer work. If I have done my for example, in 2022 I was the part of flood donation camp, and I was also a part of the society. So if you have any sort of work related to volunteer work, then you can add that as well. But lastly, the main thing is that you have to keep your CV as short as possible and as simple as possible. Also make it as authentic as possible. And if you are just a beginner and you don't know, like you are like, okay, I don't have all these experiences, then you should look around in your department and you should go to join different organizations, so you have these certificates, and then you can add all these experiences in your CV. For adding all this information in your CV, you need to have the proof for that. I think that is all about CV that I do. Thank you so much, Hira. Now we can move on to Itrat. Oh, okay. Can you hear me now? Yeah. Okay, Yes, perfect. we can. Yeah, thank you, Zoha, for moderating the session. Hello, everybody. I'm Itrat. I'm from Lahore, Pakistan, and I did my bachelor's in space science from University of Punjab. Currently, I'm pursuing my master's in Erasmus Mundus, fully funded programs, cartography program from year 2023 to 25. So I'm still writing my thesis in the final semester and working as student research assistant in Dresden at a research institute, IEOR. I will be sharing some of the things that I personally used while I was drafting my letter of motivation, the things that you should take care of, or things that really help you ace your letter of motivation. And I will also be sharing some tips and absolute don'ts and do's that you can really consider while writing your letter of motivation, because I have reviewed a couple and found those things. So first thing that I want to really highlight about a letter of motivation is that after your CV, this is perhaps the most important document. So like Hira said, that CV is just a document that has all your achievements, it's like everything that you've done so far in life, in academics, in extra co-curriculars, and it has everything, but in a very brief, like a bullet point style. Letter of motivation, on the other hand, gives you a chance to meet your selection committee before you meet. So this is how I see letter of motivation. So I see that this is a document. It's kind of like literally a letter that you're writing to a person to allow them see you, meet you before they have seen you or met you. So when I wrote my letter of motivation, I really made sure that I'm writing in a way as completely like introducing myself and starting off with in a tone that is very engaging. But before all of that, I really want to highlight what a letter of motivation sometimes lacks. So I had a chance, like I said before, the chance to review some letters. There is one common mistake that a lot of students do, is that when they think of motivation, they think of only stating or narrating their journey of what made them pursue this program. So just that, like what's the reason, what made them choose this program? But I think this is beyond that. When you're writing your letter of motivation, it is important. Yes, you have to state, like, narrate your story, like what made you choose the program. But I think it's also very important to write and let them know that you also searched about their program and that you know about the program well. I think this is the part that some students lack, and this is so the motivation is not just only कि मैंने क्या किया है, but also the person who is reading your letter and the person who is going to select you should also see, okay, this person really put enough of effort. So now I know them well, and I also know that they know my program well, or they know what this person who has written this letter knows what she or he is going for. So what are the things that you need to know before writing your letter? Number one, you really need to research
thoroughly research your program that you're applying for. So how do you do it? Go to their websites, usually on Erasmus Mundus portal. Every program has a website and all the information that they create and craft. And you have to go there, you have to check the outline, what's the course outline, what's the deadline, what are the things that are special about the program. So there's one important thing about all Erasmus programs is that they have something unique that they offer and the other program doesn't. For instance, in my case, my program, so my program offers a field school. Can I please request everybody to mute their mics? Thank you so much. Okay, so yeah, so I was saying like her program there is like a unique thing about that program. For instance, in my program in cartography, they offer a field school. Some Erasmus programs offer an internship, some programs, and it's a part of their program. So some programs offer like students a chance where they can organize a conference. So there is something unique other than just course outlines and those things. So you need to know, do your thorough research about the program, what the program is about. Second important thing that you need before writing your letter of motivation is your CV. There is a reason where we put section CV before letter of motivation is that CV gives you, like, add everything in your CV, everything that you have done so far, write it well. Why is this important? Because when you are writing a letter of motivation, you're explaining things, you're explaining your journey, you're telling them your story. And CV, literally for me at least, it worked as an outline of what things I can talk about. Because sometimes we don't remember that we did some things. It's like it was a project or maybe a conference that we attended. So if you start writing and you don't have an outline or things or everything that you have accomplished so far in a bullet point, maybe you miss it. So if you have a CV, you can look through it and say, okay, you know what? Now I know about this program. I know what this program is offering. I know what subjects I like. I know everything about the program that I want to know, what's special about this program, why I'm choosing this particular program. Plus, I know what I have to do, what I have done so far, my accomplishments, and anything, my strong points that I can mention. The third thing that you must know before writing an LOM is to know if there is any word count limitation. Is there any page limitation? Sometimes they say you only write it in one page. Sometimes they say, not more than 2 pages or not more than 1 page, or maybe 900 or 800 words. So you have to see that. Sometimes it also happens that universities give their structure. So they give you literally questions that you have to answer, and that is considered as a part of letter of motivation. So they are particularly asking you explain about your challenges, or if you encountered something and what approach did you use, and those kind of questions. So again, comes to the basic part, that do your research, know what is being asked, have your CV, know the program, know yourself, and then once you have all that information, now it's the time you can start writing. Start with a draft, right? Just write whatever. So introduce yourself, write. Talk as if, like, write it as if you are, so you write first draft, and then once you have written it, like, add the bullet points, ask your, somebody muted me, but okay, anyways, I'll continue. So what you have to do is, so you write the first draft, and once you have written the first draft, I know it's not going to be perfect, but you make improvements as you go. So what is the important part of it? Once you know that your draft is good enough, reach out to people who can review it. For people from Pakistan, I will suggest you a group which is called Erasmus Mundus Pakistan Association Facebook group. You guys can join, anyone can join that group if you're a student and if you want to apply for Erasmus Mundus. It's a huge community where you can post questions. There are already abundant of questions that are being answered. So you can get to know, you can reach out to people from your program, or just post there that, hey, I have this letter. Can anyone please volunteer to review it? And anyone can review that. So have your reviews, and that's it. Then make the adjustments. Now, let's talk about some journal guidelines that every student must, keep in mind when writing the letter of motivation, and that I also followed myself. The first thing is that when you are writing, like I mentioned before, write it as if you are talking to the person who is reviewing your application. Very important point. Like I reviewed some applications and some letters. I'm sorry, not the applications, just the letters. And I reviewed those letters. And there's this one common mistake that most of the students do is they're writing the letter. They're not even introducing themselves. They just start off with a story. Hey, I'm from this village, and the struggles and what the motivation is. I agree that this letter is about the motivation, but started with your introduction, because
see, when you are writing a letter to a friend, you don't have to introduce yourself because your friend already knows it. But this person is knowing about you, so give it a sense, give it a feel of it as if when they are reading, they're talking to you, and keep them engaged. So use active voice instead of using a passive voice. Say, I am applying for this. I am Mitrat. Say, that's how I wrote. Like, I'm Mitrat and I'm applying for this. Like, I spearhead this project. I'm this. So use I to keep it engaged. The second thing is express yourself. So, for instance, there are some words that so vocabulary is very important when you are writing a letter of motivation. A well-written letter of motivation literally can do, can ensure that, maybe the person likes you and they want to know you more. And so keep it engaging. Every paragraph should start strongly, end strongly. So you add your letter of motivation, have paragraphs in it, and all paragraphs should be strong. So aisa na ho ki they are in the middle, they are in the beginning, and they get bored and they'll be like, they have this prejudice and like, I don't want to read about this anymore. So make sure all of your paragraphs in your letter of motivation are engaging enough. And every paragraph has a new information. It has a logical flow, which I'm going to talk about what logical flow you should follow if, for instance, there is no particular guideline given to you. Just like in my case, we didn't have like a strict guideline of how you should do it. We didn't have questions. So I'm going to talk about that later. But first, some general mistakes that we're talking about, like grammar mistakes. Please, even if you are sending it to your reviewer, I'm not talking about the final submission even if you are sending it to your reviewer, even if you are sending it to the person who is going to correct you, please make sure Grammarly is free, that your letter is it doesn't have grammar mistakes, because it's such a bad impression of the person. They think that person is so careless to even read it once before sending it to us. So yeah, make it well formatted. So for instance, when you are sending your letter either to your reviewer or to the person submitting a final one, it has to be justified aligned. Use a very simple font. You don't have to go with the funny, funky, crazy fonts. Use Time New Romans, Calibri. I use Calibri. And then use just 0.12 font size. This is good enough. One other thing, if, for instance, there is no word limit or if there is no page restriction for your letter of motivation, I personally suggest that your letter of motivation should not exceed more than a page. My letter of motivation was 1 page, and the reason why I made it 1 page, it was a little bit more than 1 page. And what I did, I played off with just the font size. So instead of using 12, I used 10.5, because a good font can be between 10.5 to 12. So make sure that it's 1 page, everything is in 1 page. So it's not like they're not just reviewing your application. Mind that there will be like so many applications, so much burden. And so if, for instance, it's more than 2 pages, maybe you have written whatever a person has written everything in 1 page and the second person has written in 2 pages. Of course, 1 pager is going to be having more impact, because the reviewer or the person who's like a selection committee is going to read that through without getting bored and without having the same amount of information compared to the person who has like 2 pages. That is important. Like I said, your letter of motivation should have a heading. Write it explicitly, letter of motivation. And please do not write motivational letter. This is actually incorrect. So write letter of motivation as a heading. Give your name, like my name, Itrat Fazal, and then your Gmail, and then your address or whatever contact is. And then start with simple. Dear admission committee, address them. Dear cartography admission committee, that's how I address them. Address them, and then start with your introductions. So next thing that I'm going to talk about is definitely the structure of letter of motivation. Because when I tell people that I wrote my letter of motivation not more than a page, and then I also wrote all of these things, and they go like, how was it even possible? You're lying. So no, I'm not lying. It's actually very possible. And so I think I'm just gonna give my tips, how I used it, how I did, and how I wrote my letter of motivation. So the first thing is introduce yourself. Please introduce yourself. Do not skip it. Say, and it's like I said, dear admission committee, this is Itrat Fazal. I'm applying for this cartography program, funded by Erasmus Mundus, and offered by Technical University of Munich. First line introduction, good enough. What else can you talk about in your introduction? Please talk about what were you doing recently. For instance, if you are doing a job, mention your job. Currently, I'm working as this in this company, right? And then if, for instance, if you are working, then also not just mention your work, and then say, my job roles include this, very briefly. Trust me, these are 3-line, good introduction, good base of an introduction. So they know you, they know what you're applying for, they know that what you're currently doing and what your job roles are. Fair and clear.
And then, and for instance, if you don't have a job, then maybe you're doing an internship, mention that. If, for instance, you just graduated, you don't have a job, you don't have an internship, you're free, never mind, don't worry about it. You just have to mention that recently I graduated. Then you talk about your recent studies, whatever you graduated in. So recently I graduated in this subject, and and that's it. Starting off your second, like I said, all your paragraphs should start and kick off with a very strong punching line that make you read more. So for instance, the second paragraph should really be about you. Pitch yourself. It's like you prepared the nicest meal and you did not serve it well and you fail. So you have to, pitch yourself. Pitch yourself well. Let them know that you are a strong candidate. That you can do is by pitching yourself. For instance, if you are working if you work somewhere as a leader, if you've had a leadership role, if you work as a science communicator, if you, for instance, have been an exchange student before in any cultural exchange program, if you are spearheading a project, if you are a team leader, anything, and then name what I'm currently doing, job, whatever, and then say I am a passionate this person and I lead this and this, and try to attach that with your motivation. So for instance, in my case, since my program, like I said, is cartography, so I was working as a science communicator. I mentioned that I'm a science communicator. I came across this story that I wrote about a cartographer. It inspired me. I took this course. So everything is not. I didn't just pitch myself, but I connected that with with my motivation. Like, and then once you have that paragraph, in your third paragraph, you can now start talking about, like, see, I'm not just motivated, I also have like a educational background in it, if you have one. For instance, if you don't have an educational background and if you are pursuing a different master's, that is a challenge, of course, because then you have to tell like how that previous education has motivated you to shift your career path to the master's that you're applying now. So you have to like really look what really connects the points and everything, make sense of the story. Okay, so yes, now you are on the third paragraph. On third paragraph, you talk about your previous education. For instance, if your previous education aligns with your the program that you're applying for, this is actually good. But like I said, it cannot be always be the case. But even if it's not, that's fine. So yeah, you tell about your program. Like you said that I did my bachelor's in this. I studied these subjects, and then you can just say that this whatever I've studied before perfectly aligns with my master's that I'm applying for. This is very important that you show that not only that you have a motivation, but you also have a background and that connects well with what I am going to pursue. So talk about them, and then that's it. On third, like now imagine like we're already done with our introduction. We showed our motivation. We pitched ourselves. Now, enough about ourselves. Now we talk about them. Now we let them know that, hey, we searched you well. We know what you're offering. We know what you're putting, what you have it on the table, and we would love to have it because we know this thing, these things about you. So here you talk about their programs, and like I said, it you have to do your homework before. You have to search before what you want to go for, what the program is offering, and jot down, write it down what subject or module is offered in which university. Like in Erasmus Mundus, you have different program courses, modules that are offered in different universities. So write them down and then mention them when you are writing your letter of motivation, saying, I really particularly like this course and I cannot wait to take this in my semester. So this way they will know that you have done your homework, that you know what you're going for. And then one important thing, end this paragraph with something, like I said, every university has something special about them. So for example, in my program, they offer a field school where we can go for 10 days and spend time in mountains. It's like do hiking and also do some field related work, like in GIS. So I mentioned this, like I love extracurriculars, extra co-curriculars, and this thing is something that I really want to be a part of. I really love cartography field school. Now, why this would make a difference? Imagine a person who has not done proper research. Imagine that person has not mentioned neither the courses or modules or favorite modules, and this person has also not mentioned the field school. But imagine a person who has written all of these things. That is going to make a difference, of course, right? So you write all those things, um, and I request everybody to mute their mics, please. Perfect. So yeah. So yeah, you write your letter of motivation, and then this is how you were talking about them. You're letting them know, and then last paragraph,
talk about Erasmus Mundus. It is offered by 4 universities or whatever, how many, well, depends on how many universities are in your consortium. Mention that it's like, and I tell you that these universities are usually the top European universities. So you mentioned that these are top universities, and I can't wait, to talk about the environment, talk about the cross-cultural experience that you can get. So mention the cross-cultural experience that you can get. Maybe it's your first time, maybe it's your second time. Mention it's going to be a collective European experience. So just mention that, and then that's how you end it. End with a nice remark. Say like, thank you for reading my letter. Thank you for taking your time out to read my letter, and then I look forward to hearing from you. Something like this. So starting, you introduced it's a new information. Second, you don't have to like make a story. You don't have to extend things. You don't have to talk about unnecessary details. You talk about your details, necessary details. You move forward. You keep it engaged. Every line, every paragraph is a new piece of information, and that keeps them very much engaged and make you read it, especially if it's one page. So yeah, this is how I wrote mine. This is how I structured mine. But again, I would say that please write your letter of motivation in your own way. Everybody has a different story. Everybody, do not copy paste somebody else's, because then maybe by the stroke of luck you are selected. But honestly, it sometimes it doesn't happen that way. The way that if you write it, you review it, it's going to put much more time and effort. Also get it reviewed. Like I said, join groups, get to know people, put some effort. Please do not start your letter of motivation on the very, in the last hour, in the 11th hour. Please do not do it. I personally wrote my letter of motivation about 2 months ago, but I started the application process 6 months ago. So give it time, because please remember that so many students apply for this scholarship. You have to stand out. There will be so many scholars, so many letters that the selection committee has to read. Yours has to stand out. So avoid mistakes like grammar mistakes, like I'm repeating, like avoid grammar mistakes. Have it well formatted. Do not use a wrong font. Use a very simple Times New Roman. Good for you. Font size should be adjustable. I would suggest not more than a page. And even I wouldn't say 1.5 page. Why? Because even that gives an off feeling, maybe something is incomplete. So try to make it either 1 or 2, but 1 is the best. Yeah, I think that's it for me. And I see some hands raised. So we're going to have a Q&A session later, and maybe we can answer your questions then. Thank you so much, everybody. I think that's it. That's it from my side. Thank you, Itrat. I think we can continue with Shoaib now, and then we can take the question answer at the end. Okay. Can you guys see my screen? Yes, Shoaib, we can see your screen. Okay. So first of all, let me introduce myself. My name is Shoaib Irfan, and I'm doing my master's in Erasmus Mundus Joint Master's Degree in Waves, which is related to acoustics, vibrations, and sound engineering. But I did my bachelor's in civil engineering from NAS. And I graduated from NAS last year, and I got the scholarship last year as well. And right now I'm in France for my 3rd semester. If we talk about my mobility, my first semester was in Portugal, and my 2nd semester was in Spain. And now I'm here in France for my third semester. Okay, the agenda for today's presentation is the letter of recommendation. As my colleagues already discussed, that CV and letter of motivation is very important for your Erasmus Mundus application. Similarly, letter of recommendation has also very importance. जैसे CV or letter of motivation my colleagues discussed should be very relevant. Same here, letter of recommendation be exactly very relevant. Not a general recommendation letter will work in Erasmus Mundus. So now let's discuss letter of recommendation आपको क्यों चाहिए होता है Erasmus Mundus applications के लिए. So first of all, जब आप CV बनाएंगे अपनी, तो आप लाजमी बात है CV के अंदर अपना वर्क एक्सपीरियंस, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी स्किल्स को डिस्कस करते हैं. उन स्किल्स को बेसिकली वैलिडेट करने के लिए आई कैन से फॉर प्रूफ वी wrote a recommendation letter. And this letter of recommendation can differentiate the candidates with similar CVs, with similar background, with similar educational background, work experience, and with same research experience. Now, next one is how to request a letter of recommendation. So letter of recommendation, if you are a student, so you can take letter of recommendation from your course teacher, from your if you are working a research project with your or you are doing your thesis, so you can take a letter of recommendation from your supervisor. Or if you are working in a company, you can take letter of recommendation from your manager as well. Now the question is कि letter of recommendation mostly Erasmus के अंदर कुछ programs जो हैं उसके अंदर ये होता है कि आपने letter of recommendation just sign करवा के खुद आपने upload करना होता है. और कुछ के अंदर ये होता है कि आपने जो प्रोफेसर है या जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो आपको दे रहा है उसकी
इंस्टीट्यूशनल ईमेल या प्रोफेशनल ईमेल के थ्रू आपने अपलोड करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सजेस्ट यू के आपने जिससे भी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना है आप पहले उसके पास जाएं बाय scheduling a meeting and then just describe what are you doing, what are you, where are you applying, आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं और आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्यों चाहिए. And now let's talk about the letter of recommendation structure. So in the start, in the first paragraph, you should mention your relationship or your connection with the person from whom you are taking your letter of recommendation. For example, if आप अगर आप अपने supervisor से ले रहे हैं तो आपको mention लाजमी करना है कि ये this person is my supervisor. एंड ऑल्सो मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि जब आप टीचर्स के पास या किसी के पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेने के लिए जाते हैं तो आपको यही कहते हैं कि आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लिख के लिए हैं, वी विल रीड एंड देन साइन इट. सो यू हैव टू राइट योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन योरसेल्फ. तो आप अपना टीचर के साथ जो रिलेशन है, आपके सुपरवाइजर थे, आपके कोर्स टीचर थे, आपके मैनेजर हैं, वट एवर, वो मेंशन लाजमी करें. एंड ऑल्सो इंक्लूड योर प्रोग्रेस, लाइक इफ यू आर वर्किंग इन अ कंपनी तो आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस क्या है. और अगर आप लाइक यू आर स्टूडेंट्स तो आप अपना जो आपको कोर्स टीचर है उस कोर्स के अंदर व्हाट यू अचीव्ड, आपका आपने कौन सा प्रोजेक्ट किया, आपका ग्रेड्स क्या था. एंड देन ऑल्सो वन मोर थिंग, just add those keywords which are highly relevant to the program where you are applying. And then you can add your technical skills, आप अपने कौन से tools यूज किए हैं, आपने कौन से methods यूज किए जो कि relevant हो. And these tools, yes. I think you are changing your slides, but we can't see the changed slide. Okay, which slide you are seeing now? It's a letter of recommendation. Sure. I think we can just see the first slide, Shoaib. Yeah, you have to exit the full screen, then you can do that. Exit full screen, then if you change, then it will be changed. Shoaib, your screen is just stuck there. We cannot see anything changing. Shoaib, are you there? आपका internet problem है? I think Shoaib has an internet problem. He will join again. अच्छा ऐसा था कि मैम उनके आने तक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें. He's just coming back in 1 second. Please wait. What are you doing? What are you watching? Hello. Can I ask a question? Hello. Guys, please keep yourself muted. Otherwise, we'll have to remove you guys. We will take the question answer at the end of the session. Oh. Guys, Shoaib is coming in just a second. Will you please all wait
Just 1 minute, and everyone, he'll be here. Just wait for a minute. आई थिंक वी कैन कंटिन्यू विद द स्टोरीज। फारूक, आप अपनी स्टोरी से कंटिन्यू कर लें और शुएब को हम लोग फिर एंड पे ले लेते हैं और शुएब अपना फिर कंप्लीट दोबारा से स्टार्ट कर लेगा, ठीक है? तो फारूक, चलो, आप प्लीज स्टार्ट कर लें। okay. So is my slide visible? Yes, your screen is visible now. Okay. So before I talk about my Erasmus journey, let me briefly share my background so you can get an idea of the kind of profile I had while applying, and so this might help you compare with your own journeys and see what areas you could strengthen. So while speaking on this, I did my BSc in civil engineering from University of Engineering and Technology, Lahore, and my session was from 2017 to 2021. And after graduation, I gained around 2 years of experience in a private institution, UMT, as a lab engineer. And on the academic side, I did an IELTS and I scored 6.5 overall bands. And I did several internships and also completed more than around 30 online courses through different platforms like Coursera, Udemy, and also through IHG Delp, because some universities do offer their online courses which can help you to strengthen your profiles. And for Erasmus, I was selected in the IMFSC program, where I studied across 4 institutions. I will explain about my this experience later. And interestingly, I was selected into Erasmus program, the Coast Heather, and IMFSC, and the one I chose was the IMFSC. Apart from Erasmus, I was also fortunate to be awarded multiple other prestigious international scholarships like Finland Government Scholarship, and then unfortunately that has been finished now from the Finland government. Now they only do offer the tuition fee waiver. This is not that no longer exists after 2023. And also I get IDEX scholarship in the Grenoble University in France, and in Hungary I got the stipend Hungarian scholarship at the BME Budapest University. And for Turkey, I obtained Turkey Personality Scholarship, and also TU Graz Austria IT Gold Scholarship, and AIT Bangkok Scholarship also. And also I received partial scholarship from the University of Durham and the University of Bath in the UK. And the point here is not to compare, but to show you building your profile in a general process. Like I faced rejection as well that I will explain in my coming slide. But step by step, improving my documents, language skills, and international exposure through the online courses helped me to get succeeded by the end of my journey. So now that I have talked about the general requirements in the start of the webinar, I wanted to share a bit of my own journey with you, because I know many of you might be going through the same struggles. Like when we look at the scholarships like Erasmus, it often seems like the people just apply once and get in, but that's not the case. The reality is very different. Those who got the scholarship, they can explain this as well. Like it's not the first time that you submit your application and then you get acceptance. Even my own journey was full of challenges, rejections, and restarting again and again. Like that's why I have written here that the restarting something is not negative; it's always positive. You every time you strengthen your profile and every time you improve your chances to get in with more good profile. So it was full of challenges and the restarts. And so before I was finally accepted. And first year when I graduated in 2021, I applied for different programs without sharpening my motivation letter and the CV. And even with my good CGPA, I was getting rejected from every program, every single program. I applied in 3 Erasmus program and I got rejection among 3 of them. क्योंकि मेरे जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और सीवी थे ये बहुत ही जनरल बने हुए थे, मैंने इनको बिल्कुल भी प्रोग्राम से अलाइन नहीं था किया। और जो रिजेक्शन थी वो मेरे लिए एक बहुत ही शॉकिंग फेज था। फिर मैंने उन चीज़ों पर काम किया। मैंने डिफरेंट स्कॉलरशिप नेटवर्क्स के पेजेस को ज्वाइन किया फेसबुक पर, और अपने सीनियर से, अपने अलुमनाई से कॉन्टैक्ट किया जो कि उन फील्ड से रेलिवेंट थे जिन प्रोग्राम में मैं अप्लाई करना चाहता था।
और मैंने फिर इन डॉक्यूमेंट्स को वन बाय वन इम्प्रूव किया एंड इट टुक मी अराउंड लाइक 3-4 months टू वर्क ऑन दीज डॉक्यूमेंट्स एंड मेक देम रेलिवेंट टू द अप्लाइड प्रोग्राम्स. मैंने एक कंप्लीट लिस्ट बनाई जिस चीज प्रोग्राम में अप्लाई करना था. लाइक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है फ्रॉम सितंबर, सो इवन like 6 months ago around Feb March I started preparing myself and my documents for to apply for them. और जो करंटली इट्स अ वेरी पीक टाइम, अभी नेक्स्ट मंथ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करना स्टार्ट कर दें. तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम करता गया और जस्ट डिफरेंस कि 2022 में जिन प्रोग्राम से मेरी रिजेक्शन हुई थी मेरी 2023 में उस प्रोग्राम से मेरी सिलेक्शन हुई. और जस्ट डिफरेंस जिन जिन चीज़ों ने किया वो डॉक्यूमेंट्स थे. तो लाइक जस्ट ईच वन ऑफ यू इफ यू कैन मेक योर प्रोफाइल टोटली रेलिवेंट टू द प्रोग्राम. कैसे टोटली रेलिवेंट करनी है उसके लिए आप प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाए जिसमें अप्लाई करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मोटिवेशन लेटर है, सीवी है, उसको आप अलाइन करें. और सेकेंडली अलाइन करने के लिए सबसे जो अच्छा तरीका है वो ऑनलाइन कोर्सेज का. लेट्स सपोज मेरी जो फील्ड करंटली जिसमें मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ वो फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग है. I did bachelor's in civil engineering and I was not having idea about that field. So what I did before applying into fire safety, I obtained around 6-7 different online courses from Coursera and Udemy and some other online platforms. So those courses helped me to define myself in to the selection committee that this person has a strong knowledge about the fire safety too. तो मेरी बाकी प्रोफाइल ने ओवरऑल उस चीज में गेटिंग होने में हेल्प किया. तो यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल रेलिवेंट. तो इसके लिए आपको अलुमिनाई से हेल्प लेनी पड़ती है या उस पर रेलिवेंट प्रोग्राम के जो ग्रेजुएट्स हो गए हैं उनसे आप लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट करें या किसी और सोर्स से, तो उनसे लेकर मैं अपनी प्रोफाइल को कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ. तो ये चीजें हैं जो आप रेलिवेंट बनाएंगे तो उस चीज का जो है बाय द एंड ऑफ गुड रिजल्ट आएगा. दैट्स व्हाई रिजेक्शंस आर redirections and not the failures. So or also you have to keep in mind that this is a highly competitive scholarship. If you are getting rejected, this is not the end of world. You have to keep yourself with other options as well. That's why एक्सेप्ट इरासमस मैंने और भी काफी ऑप्शन अप्लाई किया था कि इन केस मैं इरासमस में सिलेक्ट ना हो पाता तो मेरे पास बैकअप पे ऑप्शन होने चाहिए. लाइक फ्रीलैंड गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, फ्रांस में ग्रीन स्कॉलरशिप है. देयर शुड बी अदर ऑप्शन फॉर यू गाइस एज वेल. और इस टाइम इरासमस कैटलॉग में अराउंड 220 प्रोग्राम है एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बैचलर्स का प्रोग्राम जिसने पाकिस्तान से कोई डिग्री की है और उसके रेलिवेंट कोई ना कोई प्रोग्राम एग्जिस्ट ना करता हो. इवन इफ यू हैव डन MBBS, so you can find your relevant programs also, and you have to look those programs one by one by opening the Erasmus catalog and in the required section of every program you can find this thing whether you are eligible for that or not. And now talking about my 2 years experience, it was full of I would say fun and also alongside जब हम लोग Erasmus थे, it is more relevant to those people who are already doing this journey. कि यहाँ Erasmus में आने से पहले हम ये सोचते हैं कि it's all about travel और बस जाना है और घूमना फिरना होगा. It's not like that. तो यहाँ पे पढ़ना भी पड़ता है काफी ज्यादा. You have to do other stuff as well. You have to do alongside laundry, cleaning and everything. और studies भी it's not easy, especially those students who have their first semester in France and Belgium, they can relate this well. So talking about my 2 years journey in Belgium, I started in Belgium at Ghent University where the classrooms were very international and I faced with the students from all around the world, and this gave me a very strong academic foundation and also my first cultural exposure in Europe. And of course, Belgium is famous for its waffles and chocolates, so that was the fun part of it. And in my second semester, I moved to Sweden at Lund University. This was also very hands-on with fire labs and which encouraged the independence. And it was also my first experience adapting to a Scandinavian winter, which was quite challenging because I never been to the snowy weather, and that was my first experience. But also it was a memorable part of that. And in Sweden, I really enjoyed their fika culture. And the fika is their traditional dish they do offer to international students, which is basically coffee and cinnamon buns, and it is very common there. And for the third semester, I went to UPC in Barcelona. Here, I focused more on the computational modeling as my academic part. And Barcelona was amazing in terms of social life. It's such a multicultural and lively city. There were a lot of festivals in my third semester that I enjoyed a lot. And this semester gave me both research exposure and unforgettable cultural experience. And for my final semester, I went to the University of Edinburgh in UK.
This was the most research-focused part of my Erasmus journey, where I worked on my thesis related to timber. Timber is the basic construction element, and it was also the graduation milestone, so a very special time for my Erasmus journey. The Scotland itself was an incredible with coastals and highlands and a deep academic tradition. And beyond academics, one of the biggest highlights was the chance to travel to more than around 15 countries across Europe and the UK. And each trip gave me new perspectives and experiences that shaped me both personally and professionally. So you can see Erasmus is not just about studying in the different universities, it's about living in different cultures, adapting to new environments, and growing as a person. That's what makes it so unique. And finally, I would like to conclude with a few remarks that Erasmus, like I remember that Erasmus is not just a degree; it's truly a life-changing experience. You don't just gain academic knowledge; you grow personally. You build international friendship and expand your worldwide vision. But you have to plan early and plan carefully. And this is the right time that this is the month of August, and from the next month application will open. And for the documents, recommendations, and sometimes language tests, starting early gives you a big advantage. And also be authentic and consistent in your application. Selection committees can easily see when motivation is genuine. So don't copy paste from the documents from your alumni, and don't ask them directly that to share their personal documents. So you have to write your own stories. It is well explained by Hira and Itrat and Shape before, that you have to work genuinely on your documents and share your true passion that can help you to fill your profile overall, and how the program fits into your journey. That is important to show your motivation. And also, don't be discouraged by the rejections, because every rejection is a redirection. And I myself faced rejections before getting selected, and learn from each experience, refine your application, and keep improving. It really pays off if you work hard and if you give a lot of time to your application. That will be good success at the end of the application phase. And finally, always keep in mind that the Erasmus is just not just about academic growth, but also about the cultural exchange and personal transformation. So, by this, I would like to conclude my Erasmus journey and my few advices. Now, I would like to invite Shoaib to continue about his presentation that was left. Okay, thank you, Farooq bhai. Can you guys share my screen now? Can you guys see my screen? Yes, we can. Okay, so I was talking about the letter of recommendation, and I was mainly talking about the letter of recommendation structure. So I explained like starting should be you have to explain the relationship and the connection with your professor or supervisor, and you have to mention your progress and the grade. And second, then you have to mention your project, what you did, and what you learned from the project, and that should be very relevant to the program where you are applying. And then you should mention some skills that you added in your CV. तो जो CV के अंदर आपने methods और tools और some skills add किए होंगे उसको letter of recommendation के अंदर last में mention करें. Why? Because it's a kind of a validation of your skills that you know about that tools, and you are validating that one by mentioning them in your projects. And finally, in the fourth or last paragraph, you if you did some participation in your extracurricular activities, or you are gold medalist or silver medalist, or you ranked as a top 30 or top 20 students in your university, so you should mention that thing as well. And finally, just a clear statement that you are the best candidate for this program, and then the professor signature, detail, and contact number. And here is the letter of recommendation. I just add a sample for letter of recommendation. This was my letter of recommendation sample that I added here, and in the same pattern I followed. I started with the opening, and I described my thesis. Then I added my tools. That was as my background was in civil engineering, so I added AutoCAD, ETABS, and some experimental validation that is highly relevant to the program that was where I was applying. And then I added some laboratory sessions related to vibrations and acoustics, because I was applying in the program that is related to acoustics and vibrations. And then finally, a clear statement that this candidate is has very strong profile, and is I strongly recommend this person, something like that. And usually आपको दो letter of recommendations चाहिए होते हैं. So first one I took from my thesis supervisor,
And the next one I took from the university professor who was my course teacher during my studies. Maybe I don't know. Can you see my screen? I am in the new slide. Yes, we can see it, sure. Okay. But I cannot. We can still see the sample that you were talking about, but maybe not the next slide. Okay. Okay, this was my second letter of recommendation. This one that I took from my course teacher, and in the same way, I just focused more on programming skills and the MATLAB tools, that because I know these programming skills and MATLABs are very important in the program where I'm applying. So that's why I took a letter of recommendation from that person who studied my programming language. And now, if I talk about the summary for the two letter of recommendation, so I recommend all of you guys that your letter of both letter of recommendations should like, let's suppose if you are like mostly programs के अंदर दो ही letter of recommendations चाहिए होते हैं आपको, तो try कि आप एक letter of recommendation should be very technical, like you add some technical skills, you add some technical keywords, experiments, and your projects that is exactly relevant to the project program where you are applying, and also try to add some extracurricular activities and your leadership and teamwork and your communication skills in the letter of recommendation as well. And if let's talk about the final tips. आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन के बाद ही स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप सीवी और लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख लेंगे तो आपको क्लियर आइडिया होगा कि व्हाट आई एडेड इन द सीवी एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन, नाउ यू कैन एक्जेक्टली एड दोस कीवर्ड्स एंड दोस स्किल्स एंड दोस मेथड्स इन योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. एंड also, one last thing, I already mentioned, mix academic and professional references when possible. And if some professors say to you like we will not sign your letter of recommendation because कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर मोस्टली प्रोफेसर के पास अपना एक टेम्पलेट होता है और वो कहते हैं कि हम आपको उस टेम्पलेट के ऊपर साइन करके देंगे, दैट्स इट. सो जस्ट एक्सेप्ट नो एंड सी अदर प्रोफेसर. And if you need some templates for letter of recommendation or letter of motivation or CV, you can see the website scholarsavenue.com, and that's it. And we will answer your questions in the last. Thank you. Thank you so much, Web. Now we'll call Hira for her story. I think we can continue with the personal story now. ओके, पर्सनल स्टोरी उर्दू में बता दूं? हाँ, completely fine, Hira. We just want to hear you. ओके, सो सबसे पहले अगर बात की जाए, जैसे फारूक बात कर रहे थे कि उनको जिन प्रोग्राम से रिजेक्शन हुई उन्हीं से एक्सेप्टेंस हुई, तो मैं पर्सनली क्योंकि सियालकोट से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई एमफिल का स्टूडेंट भी नहीं है, मतलब कि पढ़े लिखे हैं बट इस तरह साइंटिफिक लेवल के नहीं पढ़े हुए, किसी ने MA BA उस टाइप की डिग्रीज की भी थी. तो मैंने जब स्टार्ट किया, मुझे याद है मैंने बैचलर्स में ही अप्लाई किया था पहली दफ़ा, तो वो मोरक्को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप था एक. तो जब मैंने अप्लाई किया तो फेसबुक से ऐसे रैंडम लोगों को ही ढूंढ के पूछती थी कि क्या करना है, तो मैंने 4 लाइनों का मोटिवेशनल लेटर लिखा था. एंड आई वाज लाइक कि मेरे पास तो 4 लाइनों से बढ़ के कुछ है ही नहीं है, एक FSC के मार्क्स हैं, एक मैट्रिक के मार्क्स हैं, और इसके अलावा ये है कि मेरा ये नाम है, ये मेरे अबू है, ये मेरे अम्मी है. तो आई वाज दैट, मतलब मैं वहां से स्टार्ट हुई बिल्कुल बेसिक से. तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मतलब क्या है क्या नहीं, अलिफ बे भी किसी चीज़ की पता थी. तो मैंने हर चीज़ गलतियों से बहुत ज़्यादा सीखी है. तो फिर मैंने जब मैं यूनिवर्सिटी गई तो उसके बाद 4 साल यूनिवर्सिटी में अच्छे लोगों में उठना बैठना हुआ, और वहाँ पे मतलब कि जितना मेहनत कर सकती थी उतनी मैंने मेहनत की, और मेरे पीछे मोटिवेशन एक ही थी कि मैं ये सिर्फ अपने आप को बता रही थी कि जितने घंटे मेरे माँ बाप सोते हैं ना, मैंने उतने घंटे सोना है, और जितने घंटे वो मेहनत करते हैं मैंने उतने घंटे मेहनत करनी है. तो मेरे माँ बाप 4 बजे उठने वाले, रात को 12 बजे सोने वाले थे, तो मैंने उस तरह ही किया, दिन रात एक की, और मेरी CGPA फिर हाईएस्ट थी, मतलब सेकंड हाईएस्ट थी, और सिल्वर मेडल मुझे मिला. तो फिर वहाँ पे जब मैं यूनिवर्सिटी में थी, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, तो तब मैंने यू ग्रेड में अप्लाई किया, तो आई गॉट रिजेक्टेड. सो उसी में अप्लाई किया, आई गॉट रिजेक्टेड. और जब हम अप्लाई कर रहे थे यू ग्रेड में, तो मैंने अपनी और अपने एक दोस्त की दो लोगों का लेटर लिखा था, और मेरे दोस्त को वो यू ग्रेड की इंटरव्यू कॉल आ गई, मुझे नहीं आई. तो हालांकि दोनों लेटर्स मैंने लिखे थे. तो ये चीज़ें काफ़ी लक की भी होती हैं, बड़े ब्रेकडाउन्स भी हुए इन चीज़ों के कि यार ऐसे कैसे, इतनी मेहनत करके नहीं हुआ. जब मैं यू ग्रेड से रिजेक्ट हुई थी तो आई क्राइड अ लॉट.
तो बिल्कुल बची थी तब मैं। फिर उसके बाद जब बैचलर्स खत्म होने वाला था तो उसके तब मैंने अपने ये एमफिल के स्कॉलरशिप में अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो जब मैंने Erasmus में पहली दफा अप्लाई किया था 2023 में, तो एक जो मेरा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम में मैंने अप्लाई किया था, एंड आई फेल्ट दैट देयर इज ओनली वन प्रोग्राम कॉल्ड Erasmus जिसमें मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि इतने सारे लाइक 50-60 प्रोग्राम्स हैं Erasmus के जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आई जस्ट फेल्ट दैट दिस इज वन प्रोग्राम और उसके अंदर 2 ही सीट्स हैं। तो जब मैं रिजेक्ट हो गई उससे, तो मैंने अपने दोस्तों को बताया कि आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम अ प्रोग्राम जिसके अंदर 2 सीट्स थी पाकिस्तान के लिए। तो सब इतना हंसे कि 2 ही सीट्स थी तो तुमने तो रिजेक्ट होना ही था, मतलब अगर 2 ही सीट्स थी तो। बट उसके बाद खैर मुझे समझ आना शुरू हुई कि क्या होता है क्या नहीं होता। 2023 के अंदर आई यूज टू सेंड ईमेल्स इन चाइना एंड एवरीथिंग। तो वहां पे जब मैं चाइना में अप्लाई कर रही थी उस टाइम पे मैंने अपने एक दोस्त से सीवी बनवाई, मेरा क्लास फेलो ही था। अब वो बंदा जो था उसकी लाइक 3 जीपीए था, तो उसने मुझे सीवी बना के दी और मैंने अप्लाई किया। तो जब भी मैं ईमेल भेज रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं आया, कुछ नहीं हुआ, एंड आई यूज टू गेट रिजेक्टेड। मतलब मैंने 500,000 ईमेल कर दी बट आई गॉट रिजेक्टेड। फिर एक बंदी ने इंटरव्यू लिया मेरा, चाइना की थी, और मैं बड़ी एक्साइटेड थी, आई डिड एवरीथिंग, बट आई अगेन गॉट रिजेक्टेड। जब वो चाइना की उसने इंटरव्यू लेके मुझे रिजेक्ट किया ना, तो मेरा तब बड़ा स्वीयर वाला हार्ट ब्रेक हुआ कि मतलब ऐसे कैसे, मेरी इतनी सीजीपी है, हर चीज है, क्यों ऐसे हो जाता है। सो देन उसके बाद मैंने सोचा कि मैं ना हर चीज खुद करूंगी, मैंने क्यों किसी से सीवी बनवाई और ये वो सारा कुछ। जब मैंने अपनी सीवी खुद बनाई, मतलब सीखी, और मैंने वीडियोस देखी, जैसे आप ग्रुप का मेंशन करिए, मैं भी ग्रुप देखती थी, वहां पे कुछ लोग अपनी सीवीज को भी शेयर करते थे, और मैंने हर चीज को खुद सीखा। तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो बंदा 3 जीपीए वाला था, उसने अपने लिहाज से मुझे सीवी बना के दी थी, और मेरा खुद इतना दिमाग है, बट जस्ट बिकॉज आई वॉज डिपेंडेंट ऑन अदर्स आई वॉज लूजिंग इट। तो फिर मैंने हर चीज खुद से सीखनी स्टार्ट की, और मैंने हर चीज बनाई, सीवी बनाई, और चाइना के अंदर से खैर 2023 में मैं हर जगह से रिजेक्ट हुई थी, काफी जगहों पे अप्लाई किया था, टर्की में, चाइना में, और इरास्मस में भी। एंड देन इन 2023 आई डिड आइल्स, और उसके बाद रिजेक्शंस के बाद, और जब मैंने आइल्स किया तो मुझे साइंटिफिक राइटिंग आई कि अच्छा अच्छा ये साइंटिफिक राइटिंग होती है। और फिर उसके बाद मेरी प्रैक्टिस हो गई, फिर मैं मतलब आई वाज वेरी सीरियस उसके उस टाइम पे। तो मैंने प्रॉपर एक रजिस्टर लिया हुआ था, प्रॉपर नोट्स बनाए हुए थे कि कब किस चीज की डेडलाइन है, ये है वो है। तो तब एक जो चीज मैंने जिससे बहुत ज्यादा सीखा, आई वाज अगेन वेरी पैशनेट अबाउट चाइना, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा Erasmus में तो नहीं होगा ना, क्योंकि 2 सीट्स होती हैं, तो उसमें कैसे मेरा एडमिशन होगा। तो मैं चाइना को ही टारगेट रखती थी, तो मैंने वहां पे काफी लोगों से डील किया, उनको ईमेल्स कर, ये कर, वो कर, इस तरह। तो मेरे पास तकरीबन 10 एक्सेप्टेंस लेटर्स थे 10 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, और आई वाज लाइक हाँ हाँ ठीक है, बस मैं तो चाइना ही जा रही हूँ, मेरे घर वालों ने भी पूरा ख्वाब देखा हुआ था। एंड उसके बाद हुआ ये कि वन ऑफ माई टीचर्स ही पुश्ड मी कि तुमने Erasmus में अप्लाई करना है, और तुमने तब तक मेरे ऑफिस में नहीं आना जब तक तुमने नहीं अप्लाई करना। आई वाज स्टिल नॉट श्योर, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने कहा कि तुमने आना ही नहीं है, तो फिर मैंने Erasmus में अप्लाई किया, जस्ट कि ऐसे ही कर देती हूँ, मेरा कौन सा होना है, चलो इस तरह से। तो मैंने Erasmus में ऐसे ही बस अप्लाई किया था, लाइक मुझे नहीं लगता था कि मेरा होगा, और इस तरह से ये वो। एंड उसके बाद मुझे इंटरव्यू की कॉल आई, और फिर मैंने मतलब फिर इंटरव्यू क्लियर हो गया, और फिर मेरा एडमिशन हो गया। तो वन थिंग दैट आई व्हाई एम आई मेंशनिंग अबाउट चाइना, कि जब मैंने ईमेल्स की और जब मैंने लोगों से डील किया, और जब मैं किसी भी बंदे से उसको प्रपोजल लिख के देती थी, मैंने मतलब अगर 10 लोगों से डील किया तो मैंने 10 प्रपोजल लिखे वहां पे। हर बंदे के लिए जब मैं प्रपोजल लिखती थी तो वो टीचर्स मुझे गाइड करते थे, मतलब उनसे मेरी कॉल्स पे भी, मुझे घंटों भी मैंने कॉल्स पे बातें की हैं उन टीचर से, क्योंकि वो मीटिंग करते थे, दे वांटेड अ स्टूडेंट, तो मुझे गाइड किया करते थे कि तुम इस तरह लिखो, तुम ये करो, तुम वो करो। उस चीजों से मैं इतना सीख गई कि मुझे Erasmus वालों को भी इंप्रेस करना आ गया, और अब मैं अगर कहीं पे भी अप्लाई करती हूँ, दे लाइक माई प्रोफेशनलिज्म। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ कि मैं चाइना के अंदर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती हूँ, यूकास में, जो कि चाइना की टॉप मतलब यूनिवर्सिटी है। तो जब मैंने उसका लेटर लिख रही थी, तो वो उसने मुझे मतलब बताया कि ये तुमने इस बात पे लेटर लिखना है। तो हमने एक क्रिएटिविटी क्रिएट की कि मैंने जहाँ पे इंटर्नशिप अपनी पाकिस्तान में की थी, वो शुगर मिल थी, जो कि एक डेजर्ट के अंदर है, खुशाब में। तो वो वहाँ की जो एनवायरमेंटल क्लाइमेटिक कंडीशंस और प्रॉब्लम्स हैं, वो उस प्रॉब्लम से सिमिलर थी जो कि चाइना के अंदर काम हो रहा था। वो तकलामकान डेजर्ट था एक, और उसके अंदर भी सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस थी। तो मैंने अपना प्रपोजल इस तरह से लिखा कि जब मैंने अपनी इंटर्नशिप की एंड आई मेट फार्मर्स, then I got to know that these are the climatic conditions, environmental conditions that they are facing every year, और मैं उनको ट्रीट करने के लिए कोई जगह ढूंढ रही थी, एंड आई फाउंड दिस वर्क इन तकलामकान डेजर्ट। और फिर मैंने उस चीज को रिलेट किया, और वो मतलब मेरा प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट हो गया वहां पे। इस तरह करके फिर मैंने चीजें मतलब मुझे समझ आ गई कि किस तरह हम लोगों ने उनके किसी काम को अपने किसी काम से रिलेट करना होता है, अपनी मोटिवेशन को शो करना होता है। और उस चीज से मैं इतना मतलब कि मैंने इतना सीखा कि ऑफ कोर्स आई डिडंट गो टू चाइना, और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी Erasmus की है। तो हम दोनों बैठ के सोचा करते थे कि यार मैंने ऐसे इतनी देर चाइना में अप्लाई किया, एंड शी जस्ट अप्लाइड फॉर Erasmus एंड शी गॉट एक्सेप्टेड एज वेल। तो हम अक्सर इस बारे में बात किया करते थे कि यार तुमने बड़ी एफर्ट कर दिया ऐसे चाइना के लिए, जापान के लिए, जापान में भी मैं करती थी। बट देन व्हेन इट कम्स टू द ईमेल राइटिंग, व्हेन इट कम्स टू लेटर राइटिंग, या जनरलाइज्ड और स्पेसिफिक राइटिंग, मैं अगले बंदे का देख के बता देती हूँ कि इसने सही लिखा है या गलत लिखा है, जिस बिकॉज मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई थी वो चाइना वाले लोगों से डील कर करके। तो आई वुड से कि वो बच्चे जो कहते हैं कि भाई हमने यहाँ नहीं करना या वहाँ नहीं करना, तो मतलब अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, वो जो कहते हैं ना आपकी मेहनत जाया नहीं जाती, वो इस तरह से जाया नहीं
नहीं चाहती कि आपके बैक एंड पे आपके माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा लर्निंग चल रही होती है जिसका आपको पता भी नहीं होता। और इसी तरह मैं कहीं पे भी मतलब जॉब के लिए मैंने 2 इंटर्नशिप्स की हैं, एक बेल्जियम के अंदर इंटर्नशिप की है और वो मेरी क्लास में सबसे पहले मैंने इंटर्नशिप की थी, और अभी मैं जर्मनी में कर रही हूँ। जर्मनी में इंटर्नशिप करने से पहले मुझे 3 इंटर्नशिप ऑफर हुई थी, पोर्टुगल में, स्पेन में और जर्मनी में, तो फिर मैंने ये वाली एक्सेप्ट की। तो मैं जब अपनी बॉस से पूछती हूँ कि लाइक व्हाई डिड यू एक्सेप्ट मी, और जब मैं जहाँ पे मैं कर रही हूँ वहाँ पे इंटर्नशिप की एप्लीकेशन अवेलेबल नहीं थी, मतलब कि वहाँ पे लिखा है प्रॉपर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे कि यहाँ पे इंटर्नशिप्स की हम पैसे नहीं देते, ये लाइक अनपेड इंटर्नशिप है, बट स्टिल दे गिव मी अकोमोडेशन, दे आर आल्सो पेइंग मी। तो वो चीज़ अब वो किस तरह मैंने उसको कन्विंस किया, जिस बिकॉज मुझे उन चीज़ों का थोड़ा आइडिया होगा कि लाइक हाउ टू डील प्रोफेशनली विद पीपल। मैंने उसको चीज़ प्रेजेंट की कि भाई ये तुम्हारे में काम आ सकती हूँ और तो तुम मेरे काम आओ, एंड वी जस्ट रीच्ड अ गुड एंड। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, जब व्हेन यू आर अप्लाइंग इन मल्टीपल प्रोग्राम्स देन यू एंड अप बीइंग समवेयर। एंड देयर इज आल्सो वन थिंग दैट आई विल शेयर कि एक मेरा क्लास फेलो होता है, ही गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम लाइक एवरीवेयर इन चाइना, बट ही गॉट एक्सेप्टेड इन टर्की एंड इंडोनेशिया। सो आई थिंक ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब आप मल्टीपल जगहों पे अगर आप अप्लाई करते हो तो हमें पता नहीं होता कि हमने कहाँ पे एंड अप होना है, बट यू कैन रीड समवेयर। एंड देयर इज आल्सो वन थिंग दैट आई गॉट सिलेक्टेड फॉर लाइक किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप इन सऊदी अरेबिया। तो उसके मतलब वो जो प्रोग्राम था जिसके अंदर मेरा एडमिशन हुआ वो था बायोलॉजिकल साइंसेज, जबकि मैं एग्रोनॉमी की स्टूडेंट हूँ, लाइक प्योर एग्रीकल्चर मैंने पढ़ी है। तो हाउ डिड आई क्रैक दैट वन? तो मतलब अब वो बायोलॉजिकल साइंसेज का प्रोग्राम था लेकिन उसमें सीट्स अवेलेबल थी, तो मैंने वहाँ पे अप्लाई करते हुए उनसे ये लिखा कि आपके बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर भी डिफरेंट मतलब टॉपिक्स पे काम हो रहा है। तो मैंने उसमें जो प्लांट पे काम हो रहा था उस बंदे को ढूंढा कि ये फलाना बंदा जो आपका ये प्लांट साइंसेज पे काम कर रहा है और इसका फलाना प्रोजेक्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से आई वांट टू कम अंडर बायोलॉजिकल साइंसेज। तो दिस अब इस तरह की चीज़ों में ये मतलब इस तरह होता है कि ये काफ़ी रिस्की राइटिंग होती है। समटाइम्स ये चल जाती है, समटाइम्स उनको क्लिक कर जाती है, समटाइम्स नहीं करती, बट मैं ज़्यादातर इस तरह की रिस्की राइटिंग करती हूँ और मेरी मतलब कि 70% ऑफ टाइम्स चल जाती है। सो आई वुड से कि लाइक प्रॉपर रिसर्च अगर आप करो किसी टॉपिक पे, किसी डिग्री के ऊपर, किसी प्रोग्राम के ऊपर, तो समहाउ यू कैन रीच एन एंड। मतलब आपके लिए परफेक्शन होना जरूरी नहीं है। मैंने किसी रिसर्च वर्क में काम नहीं किया हुआ, मेरा कोई पेपर पब्लिश नहीं था जब तक मैंने एरास्मस विन किया, और मेरा कोई ऐसा कोई होता है ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट माई माइंड कि मैंने चीज़ों को फिगर आउट करना स्टार्ट कर दिया कि हाउ कैन आई जस्ट इम्प्रेस देम, दैट्स इट। आई थिंक दिस इज द बेसिक स्टोरी ऑफ मी। Thank you so much, Hira. It was really nice hearing from you, and we really learned a lot from you, and I'm sure everyone in the audience did too. You are a really good inspiration for all of us. बाकी I think Hira wants to leave early today, तो Hira फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है हमारी, और बाकी हमारे जो speakers हैं they will continue, तो हम इतरत से continue कर सकते हैं. Thank you so much, Hira, for joining again. Thank you so much, for your time. everyone. Allah Hafiz. And if someone has any other question, you can follow me on Instagram. Thank you, Hira. Thank you. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Okay, I think everybody can hear me. Yes, Itrat, we can hear you. Perfect. I don't know exactly where to start the story, but I will just start from where I started to think कि मैंने Erasmus में कैसे apply करना है, क्या करना है. But before that, I just want to mention this कि हर एक का एक अपना journey है. And I want to know everybody whoever is listening is कि कोई भी जो भी Erasmus के लिए students select होते हैं, they just don't randomly get. But definitely there is a portion of stroke of luck, that because there is like so many applicants and you know her country may say you only get to have 2 or 3 people or maximum 2 people selected. And of course, I believe that there is a stroke of luck, and I mean lots of prayers, but also lots of hard work. So I believe that everybody, and I'm not saying that people who don't get selected are not hardworking enough. But I personally think, listening to all the stories, that you should really start early when you're applying. Say, for instance, in my case, I really started applying for Erasmus Mundus 6 months before. So I was writing my thesis. It was my last day. I was about to submit. I submitted, and literally right after that, I opened my laptop and I started to search for different programs to see like what program offers me and what scholarships I should go for. And of course, Erasmus Mundus was the most suitable for me, and so I started to look for programs. So yeah, the first thing I think I was definitely very motivated that I have to apply, and it's not just I was randomly picking programs. I did not randomly pick programs. I was looking. I only applied for this program, and luckily also got selected. And I always do that. Like I don't randomly pick programs. I just choose one, and I get really passionate about that. And I was like, I really want to get into this, and then I start applying for it. Like I start preparing my documents. So 6 months is a good time. Again, like Shoaib mentioned, and Usman mentioned, that you have to like really see what your program is requiring. And even if, for instance, you don't have those skills, trust me, you can build that in 6 months or a year.
Why I'm saying that? Because I know people who've been applying and trying to apply for scholarships for 2 years, 3 years, or उस 2-3 सालों में they don't build any skill. They're just applying and getting rejected. And over rejections आती रहती हैं and they get really demoralized. तो उसके लिए आपका बेहतर तरीका ये है that take your time, build your skills. Like my fellow said, that you take courses, take free courses, do internships, and not only that. Personally, telling my experience and my story is that I was always, at least right after my high school or during my high school, I was like doing extra co-curriculars, doing volunteer work. You really have to be holistic when you're applying for these scholarships. So holistic means you're not just a nerd. They don't, sometimes I tell you this, that even in Erasmus Mundus program, you don't have to have the highest CGPA. Sometimes people with a lower CGPA than, somebody else who's having like really like a 4 or 3.9 out of 4 or 3.8, like mine was like 3.64. So it was just not the highest, in my class. So, but the thing is that this is not the only thing that you have to have that when you're applying for a scholarship. It's good that you have a good, strong academic background. So मेरा ये था कि I already was an cultural exchange ambassador somewhere. So मैं US गई थी. I had some scholarships. And again, to just mentioning these because they can help you know that what kind of profiles Erasmus Mundus scholars have. So I so far I've studied until my master's all on scholarships. So my school was on scholarship. Then my college could have been on scholarship. I missed the deadline, but anyways, but then I really worked hard on during my college, and then I got like scholarship even in my bachelor's. So if you have like previously won some scholarships, if you are good in academia and you mentioned those, like again when you mentioned everything. So mera bhi ye tha ki I had some scholarships before. I looked at a program and then I thought, okay, this program is cartography. It's really about mapping. I don't have those skills. Like I have prepared maps, but I don't have maps. I'm not a cartographer. So I took some courses before ताकि मैं अपने आप को prepare करूँ. Then there is like a Lahore Science Mela. It's a huge science festival that is held in Pakistan. I joined that because I love volunteer work. And then during my COVID, I was also working as a science communicator. So why am I mentioning these things? Because they can really help you build your profile. So जब आप इस तरह की scholarships के लिए apply करें, तो यकीनन, like I said, your CV has to be good and it also has to be holistic. And for that, you really apply for these things like कहीं कोई volunteer work हो रहा है, join it. कहीं कोई writing हो रही है, join it. कहीं कोई छोटी opportunity है, join it, because that helps you build your profile. About this, I personally think that I struggled really hard, like even to then I got a job, so I had some work experience. I was already working in Lahore, and it was field related work. So I was already working there. So मेरे पास work experience भी था, हर चीज थोड़ी थी, and then really putting in some effort in writing my CV, writing my letter of motivation, and just be throughout the process. आपने उसको ना मतलब सिर्फ थोड़ी देर हफ्ते के लिए नहीं, like you have to really be consistent on it. यहाँ पर मेरा journey ऐसा है that I came here in winters 2023. My first university is Technical University of Munich. So far on Erasmus, I would say it's been remarkable because it comes up with its own challenges, but it's still great that you're fully funded. Like you're not paying anything. You have enough money to sustain yourself here. You make friends, and then you move to an entirely different city. So that comes with the challenge of moving and mobility, and then but you're still making more friends, getting to know people. And then since it's Europe, like you can just travel around. और उसके बाद ये कि because you were already always moving, so I think kudos to Hira that she was she put some extra effort and got into internships. But if you, for instance, cannot do an internship, like for instance, so far, like right now in my final semester, I started my research position. So again, you have to really reach out to people, like Hira said, that you really have to talk to people and you have to like convince them. Like mera bhi ye tha that I wrote them and they did not reply to me, and then I wrote them back and say, hey, I did not hear from you. Like you don't have to do that. It's really bugging sometimes. But I just did that because I wanted to like respectfully ask them, like, hey, I've been waiting. You said you would respond on this date and you did not. So then they say, okay, and then they invite you and they give you a task and whatsoever the process is and selection process. So, but the thing is, right now, as we speak, none of the process that we've been through, I'm sure a lot of people are also like dealing with theirs, but it's just not easy, but you have to be consistent. You have to be honest with the process, like I say. I think it's very important that you have to be honest and do not, again, like do not compare yourself. If it's, for instance, not Erasmus Mundus, there are like so many plethora of applications that you can apply for. Yeah, I mean,
my journey so far, I'm still figuring out. I tell you, like Erasmus Mundus itself is like a milestone because you feel like, okay, you go abroad and everything is going to get fixed. But trust me, you're just graduating and you're still thinking of the next step and you're extremely confused and you don't know what to do. And it's like a foreign country and time really goes fast. One good tip that I would really like for people to know, especially if you're applying for a program and its first country is Germany, guys, please learn some language and come. Like for instance, just a thing, just a general advice to everybody that if, for instance, क्योंकि मैंने देखा है, like I personally know some of my people that have been applying for 2 years consistently. So 2 years they're working in Pakistan, they're in Pakistan, they're applying, and I didn't know this. I didn't know this, but if I was in Pakistan, for instance, if I have to redo it again or do things, from start it over again, I would learn language. So do not be free. Like Hira said, Usman said that you have to be passionate enough about, you have to be consistent enough to be accepted. And your journey is not just, it's not like one big thing on your CV. It's small little things that helps you build your profile. So if you are in any city, any country, I'm assuming also some people from outside Pakistan, so like if whatever your locality is, you pick something and then you do things and that helps you really build your profile and start your journey early. But if, for instance, you haven't done anything, don't be like, mere paas to kuch bhi nahi hai, because there are, when some people ask me, can you can you help me write my letter of motivation, for instance? So I tell them, okay, tell me about yourself, like what have you done so far, and then I can help you maybe write it. And then sometimes they say we don't have anything, and I don't know. I don't believe to agree with that, because I believe kahin na kahin apne high school mein bhi kuch kiya hai. Bring that forward in your CV and letters, and bring that kahin na kahin se kuch na kuch kiya hai. Show your skills. Um, yeah, and even in my like, I think मेरा अब तक जितना भी पढ़ाई से रिलेटेड जर्नी है वो ऐसा ही रहा है कि I never stopped. People who know me, they know this, that I'm always doing something, and sometimes I'm literally just having my foot everywhere. हर जगह पे मैंने अपना कोई ना कोई रखा होता है कि थोड़ा, and I know sometimes it's very depressing, it's very mentally stressing, and बहुत सी चीजें आप handle नहीं कर रहे होते, but in the end when you accomplish those things, they become a part of you, they become a part of your journey, and you can talk about it and reflect. So yeah, I mean, I don't know what I could say for my story, but I think this is it. It's like a sum up of how I did, what I did, if it could help. And yeah, that's it. Thank you. Thank you so much, Ikra. Thank you. Okay. Now I would like to call Shweb. Shweb, we would like to hear from you that how you came from a civil engineering background to this acoustics and waves. Like, we just want you to focus on this part especially, and then I think we Okay. can move to the question answer session. Thank you, Shweb. Okay, so very interesting stories. Thank you, Itrat and Hira and Farooq. So now, first of all, मुझे Erasmus का बेसिकली पता चला था जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर में था, when Roha got the Erasmus Mundus Scholarship. एंड देन मुझे उस टाइम पता लगा कि Erasmus की स्कॉलरशिप है, तो चलो मैंने कहा कि अभी आई वाज इन 4th सेमेस्टर एट दैट टाइम, तो लास्ट ईयर के अंदर देखेंगे. एंड देन जब उस्मान भाई जो कि स्कॉलर्स एवेन्यू के सीईओ हैं, तो मी एंड उस्मान भाई वाज फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड एंड सेम डिपार्टमेंट एंड सेम यूनिवर्सिटी. तो उस्मान भाई लास्ट 2023 के अंदर उस्मान भाई इस्लामाबाद आए और वीज़ा के प्रोसेस के लिए आए थे आई थिंक. एंड उस्मान भाई कार्डवी के यूनिवर्सिटी के अंदर हो, तो मैंने कहा जी उस्मान भाई यूनिवर्सिटी के अंदर ही हो, तो हमने मुलाकात की. तो उस्मान भाई ने उस टाइम मुझे बताया कि आई एम गोइंग फॉर Erasmus Mundus एंड प्रोग्राम का नेम ये है वेव्स. एंड देन आई गॉट मोटिवेटेड कि उस्मान भाई ने बताया कि सिविल इंजीनियरिंग के अंदर ये प्रोग्राम्स हैं और ये लोग अप्लाई कर सकते हैं. उस्मान भाई टोल्ड मी कि मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से जा रहा हूँ, सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, एक अकूस्टिक्स और वाइब्रेशंस और ये साउंड इंजीनियरिंग, ये डिफरेंट प्रोग्राम है. एंड देन दैट वाज माय मोटिवेशन. तो फिर जाके मैंने सर्च किया थोड़ा कि Erasmus के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जिनके अंदर सिविल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं. फारूक भाई, इफ यू रिमेंबर, आई मैसेज यू एज वेल, आप उस टाइम पे फायर सेफ्टी के अंदर सेलेक्ट हुए थे. तो उस टाइम पे मैंने कुछ प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किए, 4 से 5, जिसके अंदर सिविल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते थे. एंड देन उस्मान भाई गिव मी अ टिप, लाइक क्योंकि उस टाइम पे मैं अपने 6th सेमेस्टर में था और मैंने अपना थीसिस जो है वो कंप्लीट करना था, उसका मैंने टॉपिक फाइनलाइज करना था. तो उस्मान भाई टोल्ड मी कि अगर तुम इस प्रोग्राम के रिलेटेड या किसी भी प्रोग्राम के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल फायर सेफ्टी के अंदर इंटरेस्टेड हो या कोस्टल के अंदर इंटरेस्टेड हो या वाइब्रेशंस के अंदर इंटरेस्टेड हो, तो अपना थीसिस जो है वो उसी प्रोग्राम के रिलेटेड अपना थोड़ा कह लो कि अलाइन कर लो. तो मैं ऑलरेडी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर कर रहा था अपना थीसिस, तो मैंने अपने प्रोफेसर से बात की, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम वाइब्रेशंस के ऊपर काम कर सकते हैं. एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वाइब्रेशंस एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन वाइब्रेशंस. और फिर उसके बाद मैंने अपना कह लो कि प्रॉपर रिसर्च की कि वेव्स के अंदर क्या, मैं 2 से 3 दफ़ा नहीं, बल्कि मैंने इफ आई से कि मैंने
10 to 15 टाइम्स मैंने प्रोग्राम की वेबसाइट को विजिट किया कि प्रोग्राम के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, इसमें कौन कौन से कोर्सेज हमें पढ़ाए जाएंगे और कौन कौन से स्किल्स जो है वो हमें चाहिए, और सारा मैंने उसका कह लो कि डाटा एक वर्ड फाइल बनाई। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी सीवी स्टार्ट की। सीवी के अंदर सबसे मेरी जो मेन रीजन थी वो सिलेक्ट होने की रेलेवेंसी, जो कि उस्मान भाई ने बहुत दफा कहा, रेलेवेंसी इज द की फॉर एरास्मस मंडस। दैट वाज माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट दैट इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द वाइब्रेशंस, और जो कि वेव्स के अंदर हम यही पढ़ रहे हैं, वाइब्रेशंस और अकोस्टिक्स और साउंड। और इफ आई टॉक अबाउट के अगर आपका बैकग्राउंड सिविल इंजीनियरिंग के अंदर है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, तो इट डजेंट मैटर कि आपको इरास्मस के अंदर भी वो ही सेम मास्टर्स मिलेगा मैकेनिकल के अंदर या सिविल के अंदर। इरास्मस के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ऑल ऑफ देम आर मल्टी डिसिप्लिनरी। लाइक एक प्रोग्राम के अंदर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस एंड मल्टीपल प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्टली अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो आपको सिविल के रिलेटेड ही मिलेगा। तो देन फिर मैंने अपनी सीवी के बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन पे काम किया, और लेटर ऑफ मोटिवेशन मैंने 2 से 3 दफ़ा लिखा। लिखने के बाद उसको मैंने दोबारा रिवाइज किया, एंड देन मैंने ऑब्वियसली सीनियर्स फारूक भाई हैं, उजोहा हैं, एंड देन उस्मान भाई से मैंने रिव्यू भी करवाया। और फिर उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दी कि ये इसमें इंप्रूवमेंट है, और दैट्स इट। और फिर मैंने इंप्रूवमेंट की, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन अपना प्रिपेयर किया, एंड देन आई जस्ट अप्लाइड व्हेन आई वाज इन माय 7th सेमेस्टर। तो मैंने अपने लास्ट ईयर के अंदर अप्लाई किया था, जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के 7th सेमेस्टर के अंदर था। उस टाइम पे मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं था, उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ आइल्स था, मैंने आइल्स मैंने दे दिया था। और उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ थीसिस भी नहीं था, सिर्फ थीसिस का मेरे पास आइडिया था कि मैं ये थीसिस के ऊपर ये काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। और नाउ एज आई मेंशन कि आई हैव टू टॉक अबाउट कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के साथ हूं, तो देन हाउ कैन आई मेक माय प्रोफाइल रेलेवेंस टू अ प्रोग्राम जो कि एग्जैक्टली सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड नहीं है। तो वही चीज़ है कि अब इस प्रोग्राम के अंदर जो 3 चीज़ें अगर मैं डिस्कस करूँ, हम डिस्कस कर रहे हैं अकूस्टिक्स को, वाइब्रेशंस को और साउंड को। तो मैंने एक कीवर्ड्स पकड़ लिया, दैट इज वाइब्रेशंस। और मैंने अपनी पूरी प्रोफाइल जो थी उसको वाइब्रेशंस के रिलेटेड मैंने अलाइन कर दिया कि मैं बिल्डिंग्स के अंदर वाइब्रेशंस को, बिल्डिंग्स के अंदर मैं स्ट्रक्चरल डायनामिक्स को, अपनी बिल्डिंग्स के अंदर मैं कह लो कि साउंड को मैं इनोवेट कर रहा हूँ, और मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, और मेरे पास ये आइडियाज हैं, दैट्स इट। सो इसी तरह मेरे जो अभी साथ क्लासमेट्स हैं कुछ जो है, उनको उनका एग्जैक्टली बैकग्राउंड क्या है, साउंड इंजीनियरिंग के साथ, ऑडियो इंजीनियरिंग के साथ। तो इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम की कोई एक जो चीज़ है, एक डोमेन को पकड़ लें और अपनी प्रोफाइल को बिल्कुल उसी के साथ जो है वो अलाइन कर दें, दैट्स इट। एंड आल्सो यस, वन मोर थिंग कि आप अपनी प्रोफाइल को स्टार्ट लाइक सीवी, लेटर ऑफ मोटिवेशन और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, उसको जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना बेहतर है। लाइक मैंने जब मैंने अपना 6 सेमेस्टर कंप्लीट किया, जुलाई के अंदर मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम, एंड आई अप्लाइड इन जनवरी। सो आई टुक 7 to 8 months टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल अदर थिंग्स। एंड ऑब्वियसली कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं Erasmus के अंदर जिनमें इंटरव्यूज नहीं होता, और कुछ के अंदर जो है वो इंटरव्यूज होता है। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड देन आपको इंटरव्यू की भी फिर तैयारी करनी पड़ती है। और आई गॉट अल्हम्दुलिल्लाह, आई गॉट स्कॉलरशिप इन व्हेन आई वाज इन माय लास्ट सेमेस्टर। तो मैं जब अपने ग्रेजुएट अभी मैं हुआ नहीं था, मैं अप्रैल या मार्च के जब चल रहे थे, तो उस टाइम पे मेरे पास एक्सेप्टेंस आ गई थी वेव्स की तरफ से। और मैंने सिर्फ एक प्रोग्राम के अंदर नहीं अप्लाई किया था, वाइब्रेशंस का जो मेरा मेन लाइक नाउ, अगर मैंने लेट्स सपोज अगर मैं एक ही प्रोग्राम में अप्लाई करूं, तो उसमें लाइक चांसेस कम, ऑब्वियसली Erasmus Mundus स्कॉलरशिप बहुत कॉम्पिटेटिव है। तो लेकिन मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे अपने, लाइक कोर्स प्रोजेक्ट्स किए थे फायर सेफ्टी के रिलेटेड, तो मैंने फायर सेफ्टी के अंदर भी अप्लाई किया था। लाइक मैंने अपनी जो प्रोफाइल है उसको अलाइन किया था फायर सेफ्टी के साथ, के जो मैंने मेरा मेजर जो था, मैंने जो चीज़ें सीखी थी अपने बाकी कोर्सेज के अंदर, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो वो मेरा मेन फोकस था फायर सेफ्टी के साथ अलाइन करने का। सो दिस इज द वे आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो एक अलाइन कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के साथ। लाइक नाउ फाइनली आई वुड से कि अपने आपने जो भी प्रोग्राम शॉर्टलिस्ट किए हैं उसको काइंडली 3 से 4 दफा लाजमी विजिट करें उसकी वेबसाइट के, व्हाट द प्रोग्राम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू, प्रोग्राम आपसे क्या चाह रहा है, और फिर उस आप अपनी प्रोफाइल को बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट मेक योर सीवी, देन लेटर ऑफ मोटिवेशन, देन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एंड देन दैट्स इट, अप्लाई। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप Zoha I mentioned the question that you Yes, wanted thank to you so ask. much, Shoaib. Thank you, and thank you everyone else for such informative insights. Okay, guys, हम ना क्वेश्चन आंसर सेशंस की तरफ चलते हैं, और हम इस तरह करेंगे कि जिसने हैंड रेस किया हुआ है ना, हम बारी बारी आप लोगों को अनम्यूट करेंगे और आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। वी वुड प्रेफर कि हर बंदा एक क्वेश्चन पूछे, और प्लीज वो चीजें जो हमारे स्पीकर्स ने पहले मेंशन की हैं उनको हम रिपीट ना करें, या जो लोग पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं आप लोग एक दूसरे को सुनो और लाइक दोबारा रिपीट ना करो, क्योंकि हमारे स्पीकर्स का टाइम भी काफी कीमती है, एंड वी डोंट वांट कि हम चीजों को रिपीट करें बार बार। ठीक है, तो हम बारी बारी जो है ना लोगों को अनम्यूट करना शुरू करते हैं, एंड यू गाइस कैन आस्क योर क्वेश्चंस, और लाइक हम सारे स्पीकर्स जो हैं वी कैन आंसर योर क्वेश्चंस। ठीक है, तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद अभिषेक। Okay, Abhishek, you can unmute yourself and ask your question. Hello. Yes, we can hear you. Okay. Okay. Hello. Myself Abhishek Chaudhary, and I'm basically from Jaipur, Rajasthan only, India. Then like
I was preparing for my like journey in the France on the scholarship and all. So like my first question is that like I had done my bachelor's in geography and like mathematics. These all my combination in my bachelor's. And throughout my graduation, I had done my 2 year diploma in French also. So like I have a decent CGPA in my bachelor's, and I got I had done my too many extracurricular activities. So like I have a little concern about like how should I continue all the things in my on my own, or like if I'm not able to get anything. So Itrat, I think आपसे relevant profile है, तो you should answer. If I'm not getting the question wrong, so the thing is, like you said, your background is geography and mathematics. I don't know if you have already tried these programs, but we have GeoMundus, we have cartography program. It's related to your geography and mathematics background. And good thing about this program is, at least in cartography, though it's highly competitive, they still accept students from different backgrounds you can apply to. Now your question is like how you can still continue, for instance, if you don't have lots of extra co-curriculars. That's what you said, right? I had done my NCC, like a 3 year NCC certificate with the Indian Army. It's a training program. So like I had done too many things in my NCC. Like I had a gold medalist in like environmental sciences as well. So like there are too many companions and like the camps as well. So like I have a good curricular extra activities, like everything like for my aligning to my profile to I want to get admission in environmental studies and all. So like that's the thing. Like Yeah, so I think that you have a good profile. Like you said, that you're a gold medalist and you have extra co-curriculars and you have a diploma. I think you should just simply, okay, like, for instance, I give you an example. For instance, you study geography and you want to study cartography program. This is what my suggestion would be to start off, at least for your applications. For instance, in cartography program, they look for a maps portfolio. Maybe as a geographer, you have never made a map, but maybe you can, in the process of application, you can continue, started building your profile and start looking for things that are required and then apply for it. Because now you have a good CGP and everything. But again, like Shoaib and my fellows mentioned that you have to really align your profile to what the program is requiring. You first have to go and check, first look for your options. Go to your Erasmus Mundus portal and look for the programs that you want to go and apply for. And yes, once yes, you pick a I program, got you. sorry. Okay. I think you got the question. Thank you so much, Yeah. Itrat. Okay, I think we can take another question now. We will call Abdul Sami. Abdul Sami, we are unmuting you. Abdul Sami, you can ask your question. Hello, Abdul Sami, can you hear us? Assalamu alaikum. Can you hear me? Walaikum salam. Yes, we can hear you. You can ask your question. Hello. Yes, we can hear you. You can ask. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम मोहम्मद समील है. मैं कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर से हूँ और मेरे 3 सेमेस्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और मेरा CGPA 4/4 है कंप्यूटर साइंस में. तो मेरा बेसिकली कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की, वो किस तरह से CV को फॉर एग्जांपल स्टैंड करते हैं. और मैं बेसिकली 1-2 सोसाइटीज़ का मेंबर भी हूँ, लेकिन उसमें कुछ ऐसे टास्क हैं जो कि डेफिनेटली हम CV में नहीं पुट कर सकते. तो इसके लिए इस पर कुछ गाइडेंस चाहिए आप. Farooq, can you answer this, please? Yes. First of all, like you are in third semester, so this time most importantly, obviously you have already 4/4 CGPA. That is a very good. And right now your focus should be on getting CGPA. And the second thing that you mentioned about the extracurricular activities, every activity that you can think that could be relevant to your applied program. I suppose you are in the literary society or in the speech society, you can mention that in your CV as well. और या फिर लीडरशिप से रेलिवेंट कोई भी है, आप लेट्स सपोज डायरेक्टरशिप का एक रोल होता है सोसाइटी के अंदर, या वाइस प्रेसिडेंट का, जो भी लीडरशिप के रेलिवेंट रोल है, दैट आल्सो मैटर्स. तो आप उस तरीके से उसको थोड़ा रिलेट कर सकते हो सोसाइटी में अपने रोल को, कि मेरी और फिर उसमें क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. और एवरीथिंग मैटर्स, वेदर कि अब वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं या स्टडीज के अलावा कुछ भी आपका यूनिवर्सिटी लाइफ में जो एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, यू कैन मेंशन इन योर CV. बस ये पूछना था कि स्टडीज़ और करिकुलर के अलावा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो बस बता दें आप. स्टडीज और करिकुलर के अलावा ऑनलाइन कोर्सेज, और ऑनलाइन कोर्सेज से रेलिवेंट मैं कुछ क्वेश्चन देखा था कि फॉर हाउ टू गेट फाइनेंशियल एड और समथिंग, कोर्सेरा पे यू कैन गेट एवरी कोर्स ऑन फ्री. What you have to do, you just have to apply for the financial aid option.
कोर्सेरा पे, और विद इन 15 डेज वो फाइनेंशियली अप्रूव हो जाती है। तो उसके बाद आप जो भी उस पर कोर्स करते हो, आप एट दी एंड सारे उसके कोर्सेज क्लियर करने के बाद, उस सारे वीडियोस देखने के बाद, यू कैन गेट द सर्टिफिकेट एज वेल। तो उसको आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में शो कर सकते हो या अपनी सीवी में शो कर सकते हो। और बाकी रेलिवेंट कोर्सेज के लिए ये है कि लेट्स सपोज यू हैव shortlisted 5 Erasmus program and 5 are quite different from each other, तो आप हर प्रोग्राम से रेलिवेंट 3-4 ऑनलाइन कोर्सेज डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कर लो, जो कि आपकी प्रोफाइल को अलाइन करने में हेल्प कर सकते हैं। Thank you, Farooq. I think we can take a next question now. Afnan Zahid, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे पूछना था कि अगर बैचलर्स हमारा कंप्लीट हो गया और हम प्रोसेसिंग के लिए आइट्स वगैरह करना हो, इसके लिए गैप ले सकते हैं और आगे मास्टर्स फर्दर ना करें अगर, तो गैप ईयर एज सच कोई इशू करता है? आई थिंक ये क्वेश्चन भी फारूक ही आंसर कर सकते हैं। फारूक, आप बताएंगे? अच्छा, गैप के रेलिवेंट मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी कुछ लोग सम पीपल क्वेश्चन अबाउट लाइक आई एम 30 प्लस। मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा कि मेरे करंट कोहॉर्ट में, जो मैं भी ग्रेजुएट हुआ हूँ, हमारे साथ एक स्टूडेंट था हु वाज लाइक 35 इयर्स ओल्ड। ही डिड गॉट Erasmus स्कॉलरशिप, और उसका अबाउट 8 इयर्स का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस था। तो एज फॉर Erasmus डजंट मैटर। और कुछ स्टूडेंट ने बस लाइक आफ्टर बैचलर्स मास्टर्स भी किया होता है पाकिस्तान में या चाइना से या जर्मनी से किसी और से, फिर वो Erasmus की तरफ आना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई मसला नहीं होता, लोग करते हैं। इवन आई नो समवन हु डिड MS on Commonwealth scholarship from UK and then he was selected for the Erasmus Mundus। तो आपने बेशक मास्टर्स किया हुआ या आपका 1 साल का गैप है, तो इट डजंट मैटर। आपने बस अपनी जो प्रोफाइल है, लेट्स सपोज आपने बैचलर्स किया, बैचलर्स के बाद आपका 2 साल का गैप है, आपने उस 2 साल में कुछ भी नहीं किया। आप क्या करो कि उस 2 साल में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज कर लो, जो मैंने पहले बताया कि 3-4 कोर्सेज कर लो, और उसको आप अपनी प्रोफाइल में शो करवा सकते हो कि उसमें वो जो आपका गैप है वो फिल आउट हो जाएगा और आपकी प्रोफाइल भी अलाइन हो जाएगी। तो यू कैन डू लाइक दैट। थैंक यू। अरीबा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं अब। अरीबा, कैन यू हियर अस? हेलो अरीबा, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं अब। कैन यू हियर अस? ओके, आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। हम आयशा तालिब पे चले जाते हैं। आयशा, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हेलो हेलो। आयशा, आप अपने आप। यस यस आयशा, वी कैन हियर यू। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस वक्त 5th सेमेस्टर में हूँ और मैं डिग्री कर रही हूँ बैचलर्स में माइक्रोबायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। मेरे पास मेरी सीजीपीए भी अच्छी है, मेरी सीजीपीए 3.92 है। और लेकिन और इसके अलावा मैंने ऑनलाइन कोर्सेज भी किए, मैं अपनी डिग्री से रेलिवेंट कोर्सेरा से लाइक वायरोलॉजी, वैक्सीनोलॉजी एंड लाइक दोस। बट मेरे पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ? शुएब, वुड यू लाइक टू आंसर? यस, ओके। सो आई विल शेयर माई स्टोरी कि जब मैंने भी अपने लास्ट ईयर के अंदर अप्लाई किया था, तो मेरे पास भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था। जस्ट मेरे पास एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट था जो कि मैंने किया था अपनी आफ्टर कंप्लीटिंग माई 6th सेमेस्टर। एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ टीचर असिस्टेंट। एंड मैंने कुछ अपने प्रोफेसर के साथ लेबोरेटरी सेशंस किए। दैट वाज माय प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एंड दैट वन आई एडेड। सो यू कैन जॉइन योर प्रोफेसर और योर एनी टीचर फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी, जिसके साथ आप थोड़ा रिसर्च एक्सपीरियंस कर लो एज अ रिसर्च असिस्टेंट। दैट्स इट, दैट आई वांट टू से, if you want to get scholarship before graduating. थैंक यू सो मच शुएब। तूबा, अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। तूबा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। तूबा खान। ओके, आई थिंक वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। उमाइमा आसिफ, आप अपना क्वेश्चन अब पूछ लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यस उमाइमा, वी कैन हियर यू। हाँ, मैंने आइल्स दी थी 2021 में और उसके बाद मैंने बैचलर्स किया साइकिलिंग हंगेरिकन में। आई डोंट हैव अ वैलिड आइल्स, वो एक्सपायर हो चुका है। तो डू यू थिंक आई कैन स्टिल यूज इट मास्टर्स के लिए? दो आई हैव इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आल्सो, बट कभी-कभी रिक्वायर्ड होती है आइल्स, तो डू यू थिंक आई कैन यूज इट? वेल, आप ये डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम पे। यू शुड सी प्रोग्राम रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं Erasmus के जो कि एक्सेप्ट करते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर एज वेल फ्रॉम योर प्रीवियस यूनिवर्सिटी। अगर तो एक्सेप्ट करते हैं तो दैट इज गुड, यू कैन गो विद दैट। अदरवाइज आप अपनी यूनिवर्सिटी से या अपने कंसोर्शियम से पूछें कि विल दैट बी ओके, कि आप अपना प्रीवियस आइल्स यूज कर सकती हैं। फॉर मोस्ट केसेस अगर एक्सपायर हुए को 1-2 मंथ्स में या ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो दैट इज वैलिड। लेकिन अगर बहुत ज्यादा टाइम हो गया, लाइक 2-3 साल हो गए, तो फिर आई थिंक प्रॉब्ली इट वोंट बी वैलिड। तो यू शुड कंफर्म दिस विद द प्रोग्राम और द कंसोर्शियम दैट यू आर अप्लाइंग फॉर। थैंक यू। ओके, अब हम नेक्स्ट गेस्ट ले लेते हैं। प्रिया, you can ask your question. Priya, you can unmute yourself and ask your question.
Okay, we can maybe take someone else. Shakil Ahmed. Shakil, आप अपना question पूछ सकते हैं. Shakil, you can unmute yourself and ask your question. Yes, we can hear you, Shakil. You can ask your question. अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो, मेरा जो बैकग्राउंड है फूड साइंस है, तो उसमें जो प्रोजेक्ट्स है उनकी जो डेट है वो एंड होने वाली है 2026 में। तो उसकी लास्ट में लिखा हुआ है कि अभी तक रिजल्ट्स प्रोजेक्ट के नहीं मिले, और तो प्रोजेक्ट में भी कनेक्टेड, तो क्या अभी इस प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं हम? Farooq, can you please answer this? यस फॉर दैट लाइक इसके रेलिवेंट की उसकी फंडिंग उस ईयर में है कि नहीं, उसको सबसे बेटर भी ये है कि जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है ना, उसकी ईमेल मेंशन होती है प्रोग्राम की वेबसाइट पे, तो आप डायरेक्टली उनको ईमेल करो, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं प्रोग्राम्स के वो क्वाइट रिस्पॉन्सिव होते हैं, और वो आपको बता देते हैं कि हमारी फंडिंग है इस ईयर की या नहीं है। तो दैट शुड बी ए गुड वे टू आस्क। और फर्दर ये कि अगर 2026 एंडिंग ईयर है उसकी फाइनेंशियल का, तो इट मीन्स कि जो लास्ट कोहोर्ट स्कॉलरशिप था वो 2024 वाला था। फर्दर इस चीज को कंफर्म करने के लिए आप ईमेल करो उस कोऑर्डिनेटर को जो प्रोग्राम के हैं। आई होप आंसर योर क्वेश्चन। Thank you. Thank you. दानिश रजा, आप अपना question पूछ सकते हैं. जी मैं ये जानना चाहूँगा कि किस स्टेज पे हमें मोफा से अपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने चाहिए। लाइक मेरे पास सभी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसके अलावा कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं ताकि एंड स्टेज पे एक ही दफ़ा करवाए जाए, तो इसमें काइंडली गाइड कर दें। तो सेकेंडली सोशल साइंसेज के लिए कुछ ऐसे कोर्सेज रिकमेंड कर सकते हैं क्योंकि हर एक फील्ड के साथ रिलेट कर रही होती हैं, तो जो सम हाउ सोशल साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स इन कोर्सेज की बेस पे मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स और स्कॉलरशिप को कैटर कर सकें। थैंक यू। Itrat, can you answer this? अटेस्टेशन से रिलेटेड मैं ये कहूँगी आपको कि फर्स्ट तो यूजुअली उन्होंने बताया होता है कि आपने कौन सी अटेस्टेशंस करानी है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो HEC से अटेस्टेड हैं तो समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स। और साथ में आपको उसका कुछ लॉयर से भी अटेस्ट करवाने होते हैं, तो वो आप करा सकते हैं। मोफा इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड। अगर तो वो रिक्वायर्ड हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट द पर्सन एंड आस्क देम इफ मोफा इज रिक्वायर्ड। लाइक मेरे फॉर इंस्टेंस प्रोग्राम में रिक्वायर्ड नहीं था, बट आई स्टिल वेंट फॉर मोफा जस्ट ताकि अटेस्टेशन में कोई मसला ना आए। बट इफ इट्स नॉट नेसेसरी यू डोंट हैव टू डू इट, बट आई ऑल्सो इफ यू वांट टू डू इट यू कैन गो फॉर इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज HEC अटेस्टेशन आई वुड से। और जहाँ फूड साइंसेस का आप कह रहे हैं कि हम रिकमेंड करें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जो इरास्मस मुंडस की जो वेबसाइट, जो उसका वो वेबसाइट है जहाँ पे कैटलॉग है जो उसका, तो उसमें हर साल जो है वो ऐड भी होते हैं कोर्सेज और निकल भी जाते हैं। यानी शायद जो मेरे दफ़ा थे वो अब मजीद कुछ नए प्रोग्राम्स आए हैं और अब जो है वो शायद पुराने वाले भी नहीं हैं। तो यू रियली हैव टू गो सर्च इट, राइट अ कीवर्ड, तो दैट विल रियली हेल्प यू। Thank you, Itrat. अच्छा, about the attestation, I just wanted to say कि most programs में आपको attestation नहीं required होती है at the time of application, but आपको visas के time पे attestation require होती है। और उसमें पहले मोफा होता था, अब apostille होता है, तो आप apostille करवा सकते हैं। most countries वो accept करती हैं, तो I think you should go with that. तो ये depend नहीं करता program पे इतना ज़्यादा, जितना ये depend करता है कि आपने visa लेना है। तो once you get selected for it, तो you will have to definitely go for it. तो वो आपकी बाद के problems हैं। I think अभी attestation is not such a big problem while applying. तो first you should just focus on applying directly. We can take the next question. Mariam Farooq. Mariam, आप अपना question पूछ सकती हैं. Assalamu alaikum. Actually, I just wanted to ask, like, I have degree in biotechnology and I completed in 2019. And from the past 6 years, I'm teaching. So I just wanted to ask, should I apply in any education-related degree or should I go for biotechnology? ये काफ़ी देर से मेरा ये क्वेश्चन है और मुझे पता नहीं चल रहा कि रेलिवेंसी सब लोग कहते हैं तो मुझे एजुकेशन ही सेलेक्ट करनी चाहिए या फिर बायोटेक्नोलॉजी की तरफ ही जाऊँ, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी पब्लिकेशन. प्लस दिस ईयर आई सिक्योर्ड partial scholarship in UK, but I didn't go for it because they were asking for initial payment. I wanted fully funded scholarship. तो मैं वो mention करूँ because I think इतरत mention कि हमें mention करना चाहिए, तो मैं वो करूँ या नहीं करूँ? अगर करूँ तो फिर उसकी reason भी बताऊँ कि why didn't I join. Plus इतरत told कि हम लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिख सकते हैं अपनी एजुकेशन कि हमारी रेलिवेंट है, वी आर चूजिंग दिस प्रोग्राम बिकॉज वी हैव द रेलिवेंट एजुकेशन. तो अगर मैं कोई और फील्ड चूज करूंगी तो हाउ आई वुड जस्टिफाई बिकॉज आई डू नॉट हैव रेलिवेंट एजुकेशन. दैट्स इट. फारूक, आप आंसर करेंगे? यस लाइक आई गेस ये क्वेश्चन शेब और मेरे से दोनों से रेलिवेंट बनता है क्योंकि शेब भी सिविल से वेस्ट बैकग्राउंड में आई है
जो कि थोड़ा डिफरेंट है, और मैं भी सिविल बैकग्राउंड से फायर सेफ्टी में है, जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है। लाइक इन सिविल इंजीनियरिंग बैचलर्स में हमने फायर रेलिवेंट कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ा होता हमारी। मैं आपको अपनी फील्ड की एग्जांपल देके उसको एम्फसाइज करूंगा, आप उसको खुद से रिलेट कर सकते हो अपनी फील्ड से। अब हमारी फील्ड के अंदर 3 मेन डोमेन्स होते हैं, एक स्ट्रक्चर, एक हाइड्रोलिक्स जो कि वाटर है, और तीसरी होती है जियोटेक। और अब मैंने ये देखा कि मेरी इन तीनों डोमेन्स में कौन सी डोमेन ऐसी है कि जो फायर से रिलेट कर रही है। तो उसमें मैंने क्या किया, मैं फायर का जो IMFSC का प्रोग्राम था उसकी वेबसाइट पे गया, और उसकी वेबसाइट पे उसका जो कोर्स कंटेंट होता है, वो हर प्रोग्राम ने अपनी वेबसाइट के ऊपर ना कोर्स कंटेंट शेयर किया होता है। आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड में उन्होंने अपने कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाना है। तो आप जब वो कोर्स कंटेंट पढ़ते हो ना, देखते हो कि ये सब्जेक्ट है, दैट्स तो थर्मोडायनामिक्स है या फायर डायनामिक्स है, जो भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, आप उसको देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कि अपने बैचलर्स में आपने इससे रेलिवेंट मिलता जुलता कोई थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता तो आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं। तो कोर्स कंटेंट को ओवर थ्रू करने के बाद मुझे ये आइडिया हुआ कि मेरी जो सिविल की जो स्ट्रक्चर डोमेन है ना, वो उसको मैं रिलेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने हाइड्रोलिक्स को इग्नोर किया, जियोटेक को इग्नोर किया, और मैंने अपनी स्ट्रक्चर की डोमेन को टोटली रिलेट कर दिया फायर के साथ। फायर की जहाँ जहाँ की स्ट्रक्चर की चीजें मुझे लगती थी कि ये स्ट्रक्चर की हैं और मेरे BSc की स्ट्रक्चर में ये चीजें रिलेट करती हैं, मैंने उनको रेलिवेंट किया। उसके बाद जो मेरा 2 साल का एक्सआईआर इंजीनियर एक्सपीरियंस था, उसमें मैं ये जो तीनों डोमेन्स मैंने मेंशन किए, तीनों डोमेन्स में पढ़ा रहा था। बट वाइल शोइंग माय मोटिवेशन एंड CV, मैंने सिर्फ हाईलाइट किया स्ट्रक्चर को, क्योंकि मैं उसको रिलेट कर सकता था फायर से। इसी तरह मैंने आल्दो 30+ ऑनलाइन कोर्सेज किए, बट अपनी CV में और अपनी मोटिवेशन में जब मैंने फायर के प्रोग्राम में अप्लाई करना था, तो मैंने 6-7 सिर्फ वही कोर्सेज मेंशन किए जो कि फायर से और स्ट्रक्चर से रेलिवेंट थे। तो इट मीन्स कि जो सिलेक्शन कमेटी है, उनको जस्ट ये आइडिया हो कि ये बंदा फायर और स्ट्रक्चर से क्वाइट रेलिवेंट है, तो इस तरह आप उसको रिलेट कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड, मैंने एक और प्रोग्राम में सिलेक्शन हुई कोस्ट हैजर में, जो कि 180 पे डिफरेंट है। कोस्ट हैजर और फायर का आपस में कोई लिंक नहीं है। अब उसमें कैसे सिलेक्शन हो गया, कोस्ट हैजर में जब मैंने अप्लाई किया, तो मेरी जो सिविल की एक वाटर की डोमेन है, उसको मैंने एम्फेसाइज किया अपने एक्सपीरियंस में भी, अपने ऑनलाइन कोर्सेज में भी, और अपनी BSc में भी जो मैंने चीजें पढ़ी हैं। इसी तरह आपकी जो भी फील्ड है, उसमें आपको पता होगा कि कौन से सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। आप अपने प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाओ, और उन वेबसाइट पे आप देखोगे कि आपके कोर्स कौन से कोर्स कंटेंट्स जो हैं वो आपकी BSc से रेलिवेंट बनते हैं। आप उन्हीं को पकड़कर जो है ना, उनको एम्फसाइज कर दो CV में, मोटिवेशन लेटर में, और हर डॉक्यूमेंट के अंदर। So that would be quite helpful. I think this is the answer to your question. Can I add something to it, please? Yeah, Yes, sure. of course. Acha, yeah, I also happen to know so many fellows in my batch in Erasmus Mundus, जो कि geography का उनका completely background नहीं था, उनका architecture था, but they're still doing या उनका civil था, तो they're still doing cartography, which is related to more of like geography and GIS. तो अगेन उससे भी रिलेटेड ये है कि एंड देन आई पर्सनली नो समबडी एल्स जो सिविल इंजीनियर केमिकल इंजीनियरिंग उनकी डिग्री थी, एंड नाउ शी इज अप्लाइंग फॉर अ मैनेजमेंट डिग्री। तो लाइक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट डिग्री आर वेरी ऑपोजिट। तो इस तरह की सिचुएशन में फॉर इंस्टेंस उन्होंने किस तरह से कहा, यू जस्ट हैव टू जस्टिफाई व्हाई यू आर शिफ्टिंग योर करियर पाथ इन केस। और लाइक फारूक आल्सो सेड कि यू हैव इनफ टाइम टू टेक सम प्रोजेक्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज, ताकि आपकी उससे रेलिवेंस बढ़ जाए, कि आप उन्हें बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना लगे कि बिल्कुल ही आउट ऑफ नो वेयर द पर्सन इज चूजिंग दिस। यू हैव टू गिव अ बैकग्राउंड लाइक दिस इज व्हाट आई एम चूजिंग द करियर पाथ, दिस करियर पाथ। तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल दे रही हूँ, सॉरी केमिकल इंजीनियरिंग की एग्जाम्पल दे रही हूँ, उन्होंने जहाँ जॉब की वहाँ पे शी वॉज लैकिंग मैनेजमेंट स्किल्स। So she said like projects and management, I want to be like I want to work in industry but more on management side, and that is why I want to choose this degree. So you always have to justify that. Thank you so much, Itrat. Acha, now we have with us Usman here too. So I would like to call him and he would join the call too. Over to you, Usman. I think you can move on to the next one. Okay, probably he'll be joining in 5 more minutes. So we have to see. Wait. So we can take the next questions in that time. I think Imran Jamal is, you can ask your question. Am I audible? Yes, you're audible. Hello. Yes, Imran, you're Myself audible. You can ask your Imran. question. Myself Imran SJ. I'm presently studying third year BSc Honors Agriculture. I actually have a confusion regarding letter of motivation. Is it something that we have to write it on our own, or should it be given by professor? Hello. Is my question Shweb, clear? can you answer the question?
ओके सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग सो आई थिंक उन्होंने ये पूछा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर क्या चीज़ मेंशन की जाए बिकॉज ही हैज अ बैचलर्स इन एग्रीकल्चर राइट नहीं, आई थिंक ही आस्क्ड कि लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिखना है या किसी से लिखवाना है. आई थिंक दैट्स व्हाट हिज क्वेश्चन. Yes, that is my question. ओके आई एम सॉरी सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेटर ऑफ मोटिवेशन ऑब्वियसली आप खुद ही लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपकी जर्नी क्या है आपने बैचलर के अंदर क्या पढ़ा है एंड व्हाट यू डिड तो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिखें फर्स्ट ऑफ ऑल मेक फर्स्ट ड्राफ्ट योरसेल्फ एंड देन यू कैन इफ आई से यू कैन रिफाइन इट फ्रॉम अदर पर्सन लाइक जब आप एक ड्राफ्ट अपना लिख लेंगे फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे कि मैंने लेटर ऑफ मोटिवेशन के अंदर ये चीज़ लिखनी है तो उसके अंदर अलॉट ऑफ मिस्टेक्स होंगी तो आप वो रिफाइन करवा सकते हैं किसी से दैट्स इट आई कैन से लेकिन यू शुड ट्राई टू राइट योरसेल्फ. Okay, thank you so much, Shoaib. And now I think Usman will join. Sorry guys, hello, assalamu alaikum everyone. Sorry, I was not here in the beginning. I was in office and we are working on some experiments. I couldn't join. First of all, sorry, and thank you everyone for the speakers. We are here from like very different backgrounds. Like Shoaib is here, Itrat is here, Farooq, Hira, and everyone. And I was listening to sometimes, and they have explained, I think, everything very clearly. And you are lucky that you guys were hearing this, their experiences. So yeah, it was really nice that and so many people joined and you guys are asking questions now. And also I think they are very helpful with you guys. And this is something that I really like about Erasmus. All the Erasmus guys or people, they are very helpful. And whenever you guys try to reach out to them, just like try to be a bit more professional, try to ask them like exact questions where you are struggling because they are also very busy with their stuff. They have to do to submit a lot of assignments, their thesis. They are working on so many other things also, and they are also very busy. So this was really nice that you guys all joined. No, by the way, if you have any questions, others, I think we have more 5 to 10 minutes that we can take more questions. Usman, I think you have to like unmute people and then or maybe tell them like who's next. Okay, I think I can do that. Okay, you're here. Yeah. Maybe we can start with Ali Hassan. Ali, you can ask your question. Assalamu alaikum. Myself Ali Hassan. I am from Chennai and I did my MSc Zoology from JC University, Faisal in 2021. And last time I applied for Erasmus and rejected by एडमिशन कमेटी एंड माय रिजेक्शन जो दो मेंशन थी उसमें ये था कि आपने एक लेट अप्लाई किया दूसरे नंबर पे आपने जो रिकमेंडेड लेटर हैं वो अपलोड किए हैं वो एक किया है हालांकि मैंने एक फाइल बना के ना दो इकट्ठे किए थे तो एक ये दूसरे नंबर पे मैं एक्चुअली जॉब भी कर रहा हूँ 2016 से जॉब के दौरान ही मैंने अपनी एमएससी ज़ूलॉजी कंप्लीट की थी तो मेरी जॉब जो है वो मार्केटिंग के रिलेटेड है मार्केटिंग ऑफ मेडिसिन में करता हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में तो काइंडली आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि हाउ शुड आई विन एंड इन विच सब्जेक्ट आई कैन अप्लाई Itrat, would you like to answer that? Yeah, I would first say that please apply on time because अगर आपने उस वक्त में नहीं apply किया then there is no chance that they are going to take your application or consider it. Second is I am not sure कि again like each Erasmus program is different. Usually ऐसा नहीं होता कि there is a limit कि कितना क्या age limit है या कितनी देर से किसी ने अपना masters किया या नहीं किया तो I hope कि I'm assuming कि उसके लिए कोई मसला ना हुआ हो but I would again say like maybe it's just the documents. Maybe if you ask somebody to review your documents and they maybe can point out if there is more room for improvements. So यूं करके आप improve करके maybe you can try again and on time of course. अच्छा, I would like to add something to this. I think एक चीज़ ये कि आपने अगर जो अपने लेटर्स हैं उनको एक साथ अपलोड किया ना लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस को तो यू शुड मेक श्योर कि रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम क्या है अगर वो ये चाहते हैं कि आपके जो प्रोफेसर हैं या सुपरवाइजर या जो भी आपके रेफरीज हैं वो अपलोड करें तो यू शुड मेक श्योर कि दे आर अपलोडिंग इट थ्रू देयर ऑफिशियल ईमेल्स अगर आप खुद से अपलोड करोगे तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा एंड दे विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन तो यू शुड मेक श्योर कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली क्या है यू शुड फॉलो देम और बाकी अगर आपको प्रोग्राम्स जो चाहिए तो एज वी मेंशन्ड अर्लियर इन द स्टार्ट ऑफ द सेशन एज वेल कि erasmusscholarships.com हमने वेबसाइट बनाई है जहाँ पे जाके आप अपनी एग्जैक्ट
फील्ड के अकॉर्डिंग जो है ना वो सर्च कर सकते हो. तो आई थिंक दैट इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरीवन एंड यू कैन गो देयर टू सी. अब हम अर्शमान आमिर अवान को लेते हैं. अर्शमान, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस. Yes, thank you so much. Am I audible? Yes, you are. Yeah, first of all, thank you so much for all the panelists for their deep insights regarding all the information about Erasmus Mundus Scholarship. I graduated from Institute of Space Technology, Islamabad, in mechanical engineering, and my undergrad research was published in South Korea, which was based on robotics, which was my final year project. So, Itra mentioned all the information regarding letter of motivation, which is a written letter of motivation. But I've seen some of the programs at the portal which require video presentations. I mean, three minutes, 4 minutes video. So no one talked about this domain. So if anyone could please just mention or give the overview about how we can craft the video presentation. I mean, we'll first write it similar to the letter of motivation which we write, and then speak, or we just make a presentation and speak accordingly. Thank you so much. Okay, I think इसके बारे में I can tell you a bit because I got acceptance into Erasmus Mundus courses and one of the program was CES 4.0 and I had to make a video for that around I think 3 minutes. The main thing that they're looking for, like why you want to join this program and how your profile is aligned with this program. Before reading your letter of motivation, they just want to listen to you because now there are so many programs around the world. They are shifting to videos and they are like not much interested in writings because of the recent developments of AI. Now I'm seeing this trend that universities and all of the other things are now more shifting towards like they want to see you in person. They will be more focusing on your CV and then they will be more focusing on your interview, even not on videos because videos is also like getting generated by AI and something like that. And to address your question, I would say like you just need to answer. There is no need of presentation or something like that. Just open your camera and speak. You have to answer two main questions: why you want to join this program, and in video you can be a bit more you can say non-scientific and you can tell them a story maybe with any your final project or anything like that, like that motivates you towards that program. And if you have published some papers you can mention, but they can of course see your CV. Just don't repeat your CV or don't repeat your cover letter that you have already written. Just tell them a story in your video. And I made a video like, and that program was more related to vibrations, and I had a background in vibrations due to my final year project, and I pitched the same idea in my video, and that helped me got acceptance in that program too. And they also invited me for an interview. So I think the first part is you have to answer like why you want to join that program, and the second part how your profile is aligned towards that program. I hope this answered your question, and I think it will take around 3 minutes at max. Your video should not be longer than 2 to 3 minutes. It's enough. Okay. No, I think you guys can take another question. And I think our speakers don't have so much time, so I think there should be last 2 to 3 questions. Okay, next we have Isha Nadeem. We can take her question now. Isha, can you unmute yourself? Am I audible? Welcome, Salam. Yes, you are audible. Okay, so I am currently 8th semester BSc student and I will graduate next year. So I have a good CGPA 3.5 plus and have done internships, like you can say 3-4 internships. And but the thing is, I don't have any co-curricular experience like leadership or any. I don't have like any participated any of the society in my university. So what do you suggest कि मुझे भी wait करना चाहिए अपनी CV को और build करना चाहिए? I should join any society or do any like social work, or should I start to apply for this scholarship? Thank you. Idrat, would you answer that? I would say that apply. You never know if you get acceptance. So prepare your documents and apply in case. Like, but this should not stop you from seeking opportunities or doing extra co-curriculars. There are different organizations or maybe projects that you can even spearhead on your own, and then you can slowly build your profile while also like applying it in case, for instance, you feel like this is the reason for rejection or this is the reason why this was something lacking in
was one big reason of rejection, you are still working on it, right? And you can always build that up and apply again. So I would not say wait for it, build it. I'd say apply and then also like continue building your profile. Thank you, Itrit. Now we can take a question from Dr. Anaya. Yeah, Anya. Can you unmute yourself? Okay, I think Dr. Anya, can you unmute yourself? Okay, maybe we can take another question. We can take a question from Bilal Ahmed. I think you can unmute yourself now. Bilal. Thank you all. This talk is very useful. I am Bilal Ahmed, a chemistry graduate from Quaid-e-Azam University, Islamabad. Actually, my question is about the letter of motivation. Can we mention the professor name whose research is aligned to me in the letter of motivation and who is also present in the consortium? Will it give a positive feedback to the admission committee? And my second question is that should we need to mention our publications in the letter of recommendations? Because in our university, many professors give the letter of recommendations, which is a very universal and generic template. So as Shoaib bhai mentioned that we have to write it at ourselves. So what should we do now? And the last question is that I have contacted many alumni on the Facebook, but they did not reply. So how we can reach you out for your evaluation? Shoaib, can you answer that? Yes, okay. Regarding letter of recommendation, I will answer. अगर तो आपकी पब्लिकेशन जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं और रेलिवेंट है उसके तो और आप अपना लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी उसी प्रोफेसर से ले रहे हैं जिसके साथ आप अपने पब्लिकेशन जो पब्लिश की है, देन यू शुड मेंशन दैट वन इन योर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन. लेकिन इफ सच अ केस कि अगर आप किसी और प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले रहे हैं लेकिन आपका जो वो पब्लिकेशन है वो एग्जैक्टली रेलिवेंट है, तो आपने अपनी सीवी के अंदर वो मेंशन कर दिया, लेकिन अगर आप अपनी पब्लिकेशन लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के अंदर भी मेंशन कर दोगे एंड द प्रोफेसर आफ्टर रीडिंग द प्रोफेसर साइन इट, सो इट डजंट मैटर. लेकिन ट्राई कि आप उसी प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लो जिसके साथ आप अपने प्रोजेक्ट किया, आपने अपनी पब्लिकेशन की है और जिस जो आपका हाईली रेलिवेंट जो चीज़ है जो आप प्रोग्राम के साथ अलाइन करना चाह रहे हैं. एंड लेटर ऑफ मोटिवेशन, आई थिंक इतरत यू कैन आंसर कि वो हमें मेंशन करना चाहिए जो उन्होंने बात की कि रिसर्च प्रोफेसर की प्रोफाइल. It depends. So, for instance, it's not going to harm your letter of motivation if you mention that कि आपको इस particular professor का ये काम बहुत पसंद है. It's always going to like give you a direction or give them an impression that you have you have done your research on it. So go ahead, mention it as soon as you say okay, we come. मुझे पसंद आया है और मैं इनके साथ आगे मुझे इनके कोर्सेज लूंगा या इनके साथ काम करूंगा या रिसर्च एक्सटेंड करूंगा for your master's. Or so I think it's not going to harm your CV. Oh, sorry, your letter of motivation. Yeah, you can mention. Thank you, Itrat. And now we can take a question from Aisha. You can unmute yourself. Aisha Zinat. Yeah. Thank you so much for giving this opportunity. First of all, I would like to thank Usman sir. Because of him, I came to know about this scholarship and all the team members who have been encouraging us. So my question is basically, I got 3 of the programs, that is Global, Pioneer, and one more is Goals, which is related to management because I have a bachelor's degree in BBA. So I'm looking something in management, marketing, or business. So in this, basically, they are telling the first one of the courses they are telling you have to upload for the university. So I'm a bit confused. For the university application for the scholarship, should I apply differently or is it one itself? I'm a bit confused with that thing. And apart from this, I'm not understanding how to do the CGPA conversion. It is for CGPA out of 4 or out of 5. So could you please answer Farooq, this? can you answer that? Farooq, can you answer that? I will answer the second question. For the first one, I am not sure regarding goals program because that the goals program के scholar भी बता सकते हैं element. CGP कन्वर्जन का ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप एप्लीकेशन फिल कर रहे होते हैं तो उसमें उन्होंने टोटल स्कोर और अचीव स्कोर का कुछ होता है, तो आप टोटल स्कोर में 5 मेंशन कर सकते हैं और अचीव में 5 में से जितना लिया, तो दैट वुड बी द सॉल्यूशन फॉर दैट. मैं समझ गई, बट ये वाला जो क्वेश्चन था ना उसमें ऐसा आ रहा है कि यू हैव टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल KU यूनिवर्सिटी टूल समथिंग. सो आई एम नॉट गेटिंग दैट पॉइंट. मुझे यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट अप्लाई करना है या मोटिवेशन लेटर में भी लिखना है, तो मुझे यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना है या स्कॉलरशिप के बारे में? एंड यूनिवर्सिटी Okay. Yeah, Aisha, I got your question. Okay, Aisha, आप जो जिस प्रोग्राम में अप्लाई करी हैं, दैट्स ग्लोबल. आई थिंक ग्लोबल की आप बात करी. जी.
Global is actually, I think, related to, if I'm not wrong, with University of Edinburgh, and I think Farouk was also there. And you have to apply at University of Edinburgh, और जो UK की वो यूनिवर्सिटी है जिसके साथ related है. There are some courses जिनमें आपने यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना होता है. They don't have a separate portal for that program in particular. For example, कुछ KU11 के भी ऐसे courses हैं जिसमें आपने KU11 के portal के ऊपर जाके अप्लाई करना होता है. लेकिन most of the 90% of the Erasmus courses में ऐसे ही होता है कि you just have programs website और आपने वहीं पे जाके अप्लाई करना होता है. Like in all of our courses, as I know, like in IMFSC also, आपने KU11 की वेबसाइट पे भी अप्लाई करना होता है. And in Waves we just apply for on programs website. तो आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होगा, बट यू जस्ट हैव टू रेफर टू योर प्रोग्राम कंसोर्शियम, नॉट यूनिवर्सिटी, बिकॉज वो प्रोग्राम की जस्ट एप्लीकेशन उस यूनिवर्सिटी में कंसीडर हो रही है. एंड दे आर लाइक जो उसकी कंसीडर होगी, जो लाइक ऑल एडमिशन कमेटी होगी, वो सारी यूनिवर्सिटीज की होगी. तो यू हैव टू एड्रेस all of the universities and program as a whole, not the single university. So I hope it answered your question. जी, थैंक यू. तो वो स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली मतलब कंसीडर हो जाएगी ना? Yes, yes, exactly. ऑटोमेटिकली कंसीडर होती है. जैसे मैंने आपको बताया, IMFSC में फायर सेफ्टी में ये जो फारूक का कोर्स है, वी जस्ट अप्लाई ऑन KU11 वेबसाइट. एंड अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो यू गेट एन Erasmus Mundus scholarship, otherwise you get partially funding or something like that. They will inform you. I would like to add here. फारूक रिगार्डिंग IMFSC, तो जिस पोर्टल पे अप्लाई करना था वो भी यूनिवर्सिटी का पोर्टल था, ग्रांटेड यूनिवर्सिटी का पोर्टल था. और उसमें अप्लाई करते हुए एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन दे आस्क, उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं. तो सिंपल एक ऑप्शन को टिक करना होता है. उसको टिक करने से डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है, उसके अंदर वो आप कंसीडर हो जाते हो. तो आई एम श्योर कि अगर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अप्लाई करना है तो वहाँ भी आपसे स्कॉलरशिप के लिए पूछेंगे कि अप्लाई करना है उस पर कि नहीं. One more thing that I want to add, like Farooq said, कि कभी आपको टिक करना पड़ता है, but in some programs they give you a deadline. Like for instance, in my program they say March 15 से पहले जो भी applications होंगी, they are automatically considered as Erasmus, excuse me, applying for a scholarship. But like तो आपको डेडलाइन का भी ध्यान रखना है. बट जनरली मैं ये कहूँगी कि आप ये देखें कि वो आपका जो भी एप्लीकेशन का जो भी उन्होंने प्रोसीजर समझाया, आप उसको फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ यूनिवर्सिटीज आस्क यू टू अप्लाई थ्रू यूनिवर्सिटीज. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर अप्लाइंग इन जर्मनी एंड देन यू ऑल्सो अप्लाई टू द होम यूनिवर्सिटी, लाइक फारूक एंड उस्मान सेट के एक यूनिवर्सिटी में करने से सब हो जाता है. तो लाइक यू हैव टू रियली लुक इनटू योर प्रोग्राम्स एंड से व्हाट are they asking you to apply and where they're asking you to apply. Okay, I just want to add one little thing. अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा specifically about the program, तो the easiest thing is to email the coordinator. You can just ask anything you want, especially इस तरह के questions जो कि technical होते हैं and they are not like understandable, so you can easily ask. Now we're going to take the last question. Ashwin Dion से हम ले रहे हैं last question. Okay, maybe we can just take the last question from someone else because I cannot see her. जिया, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं. Hello, can everyone hear me? Yes, we can hear you. Thank you so much. I've been waiting for so long कि मेरी बारी कब आएगी. So my main question is that हमें एक कोई लिमिट होती है कि हम Erasmus में इतने ही सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं, या अगर मेरा बैकग्राउंड जो है वो BS फूड एंड न्यूट्रिशन का है, और अभी मैंने काफ़ी फील्ड्स देखी हैं, लेकिन मोस्टली कोई भी Erasmus में क्लिनिकल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई फील्ड नहीं है. बट अगर मैं कोई फूड से रिलेटेड अप्लाई करती हूँ, जैसे हाइजिया एक फील्ड है जिसमें मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, साथ में एक एग्रीकल्चर की फील्ड है, मुझे कोई और पसंद है, तो अगर वो आपस में रिलेटेड नहीं भी है तो मैं उसमें अप्लाई कर सकती हूँ, और कोई लिमिट होती है कि आप इतने में अप्लाई करो? Farooq, can you answer that? Yes, regarding limit, 2022 से पहले लिमिट थी Erasmus प्रोग्राम्स पर कि आप मैक्सिमम 3 पे अप्लाई कर सकते हो. आफ्टर 2022 आप जो है बेशक 10 प्रोग्राम्स पे अप्लाई करो, 20 प्रोग्राम्स पे अप्लाई करो, उसमें कोई इशू नहीं है एज फार एज के वो आपसे रेलिवेंट है. और सेकेंडली आपने ये पूछा कि आप जिन प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहती हैं वो दूसरे से क्वाइट डिफरेंट है. डजंट मैटर, अगर वो दोनों आपसे रेलिवेंट हैं तो आप दोनों में अप्लाई कर सकती हैं. लाइक मैंने आपको एग्जांपल दी IMFSC की और कोर्स हैदर की, दे आर क्वाइट अपोजिट टू ईच अदर, बट स्टिल आई अप्लाई बोथ एंड आई